Good afternoon to everyone. Here is your host Aspa RB, Media Manager at Shahruh Technology. On behalf of the organization team, I am honored to welcome you all to the International Online Conference on Emerging Trends in Media Tech. As you may know, Shahruh Technologies is committed to pioneering advancement in media and technology. Our journey has been driven by a passion for innovation, education, and empowerment through digital tools and resources. Today, we are proud to bring together a global gathering of experts, thought leaders, and innovators who are shaping the future of media tech. We are deeply grateful to all of you for joining us. I extend a special welcome to our distinguished keynote speakers and esteemed panelists, whose expertise and insights will guide our discussions today. To begin this conference with blessings and guidance, let us start in the name of Allah, the most gracious and the most merciful. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما صدق الله العلي
Allah. To honor our homeland and the values we hold dear, we will now play the national anthem of Pakistan. I invite everyone to join in this tribute. Now it is my great pleasure to introduce our first keynote speaker, Ms. Mariam Khan. Ms. Mariam is the CEO of the Global Community Development Foundation, where she has been a driving force in promoting social and economic empowerment across communities worldwide. Today, she will be sharing her insights on a highly relevant topic: emerging technology and women empowerment, characteristics, and way forward. Her expertise and dedication to women's empowerment in the digital era are truly inspiring, and we are excited to hear her perspective. Ms. Mariam, the microphone is yours. Thank you so much, Ifa, and thank you so much, Shahruh Technology, for conducting such a needful conference, especially in the women's perspective. And I'm really grateful to be selected as the keynote speaker on your platform. So thank you so much. Due to some internet constraint, I'm unable to share my screen. So I can present my presentation on my from my laptop, but I have already shared my presentation with the staff also. So thank you so much. So emerging technology and the women empowerment characteristics and the way forward is our today's topic for this global conference. And I congratulate to the platform to select the keynote speakers across the globe and trying to add the value, especially in terms of women empowerment. What we are going to cover today: a brief outline for today's topic. We are engaged this critical conversation. We recognize the transformative potential of technology in advancing gender equality. At the same time, we must confront the systematic barriers that hinder women from fully benefiting from these advancements. Why this topic matters to us and where we are standing today. Emerging technologies are reshaping the world. Gender gap in technology access persisted. Empowering women through technology, benefiting society. These challenges can address by focused on the following critical areas, which we are going to discuss
on this global platform today. Digital access and inclusivity. Access to digital tools and internet connectivity remains a fundamental challenge in many parts of the world. Statistics show a persistent gender gap in internet use, particularly in rural and low-income areas. Digital access is no longer a luxury. It is a necessity for women to engage fully in society and in the economy. Achieving digital inclusivity is an essential first step towards empowerment. The potential of emerging technology is hidden in the understanding of emerging technology and the impact of these things which we can reach to the women through artificial intelligence, blockchain, Internet of Things, and data analytics. Where do we go next? Potential of emerging technologies for women. Economic empowerment and financial inclusion. Emerging technologies like mobile banking, blockchain, and digital wallets can bring financial services to women who lack access to traditional banking systems. These tools enable women to save, invest, and access credit, fostering entrepreneurship and economic independence, particularly in underserved regions. Access to education and skills development. Technologies such as learning platforms, virtual realities, and artificial intelligence powered tools provide flexible learning opportunities for women. These platforms help close the education gap by offering access to STEM subjects and vocational trainings, empowering women with skills and critical for thriving in technology-driven economy. Healthcare advancements and accessibilities. Telemedicine, wearable health devices, and artificial intelligence is diagnostic improve women's health outcomes, especially in the area with limited healthcare infrastructures. These technologies facilitate early dedications of diseases, maternal health monitoring, and the mental health support for contributing to overall health and well-being. Enhanced advancing and social empowerment. Social media platforms and the digital communication tools amplify women's voices, enabling advocacy for gender equality and awareness of GBV issues. Emerging technologies foster global networks and solidarity, allowing women to challenge systematic inequalities and engage in social change initiatives. Safe and inclusive work environments. Innovations in workplace technologies, including remote working tools and digital safety applications, create safer and more inclusive environments for women. Additionally, AI-driven systems can mitigate consciousness bias in hiring process, promoting greater diversity and quality equity in professional spaces. What are the key challenges of being women to be in the new technologies or in the AI technologies? Barriers to women's empowerment in technologies. Number one, the biggest barrier is the gender gap in digital access. Underrepresentation in STEM education, and also lack of financial inclusion. Safety concerns online. So how can we overcome to these challenges? By planning, by production, and by implementation of the key policies for the women. Key challenges for the women in emerging technologies
which is we can addressing these challenges requires systematical changes. Digital divide and accessibility. Women, particularly in low income and rural areas, face limited access to digital tools and internet. The gender gap in mobile phone ownership and internet use continues to restrict women's participation in technology advancements, making it harder to harness the benefits of emerging technologies. Underrepresentation in STEM. Despite progress, women remain underrepresented in science, technology, engineering, and mathematics. Structural barrier, culture norms, and lack of mentorship is still hidden a women's entry and retirement in the tech career, especially in the cycle of gender inequality in innovation and leadership. Workplace discrimination and gender biasness, and cybersecurity and online harassments. As women engage with digital platforms, they are disappropriately targeted by online harassments. Online harassments like cyberbullying and privacy breaches. These threats not only comprise their safety, but also stopping them from leveraging digital spaces for personal and professional growth. Also, the limited representation in the leadership and the decision making, which is again, it's a big barrier for the women that they are, in a very low number in the leadership positions in the IT sector. So women are underrepresented in senior management and the decision-making roles in the tech sector, which influence product design, number one, policies and workplace cultures also. This lack of diversity often results in technologies that do not address women's needs and concerns. So, at the end of this portion, addressing these challenges requires systematic changes, including improving access to education, creating safe digital spaces, offering mentorship programs, and fostering inclusive policies at all levels. Bridging these gaps can unlock the full potential of technology for women globally. Thank you so much, and thanks for inviting me on such a insightful conference and need of the hour. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Mariam, for the wonderful conversation that you have just shared with us. And yes, this is a world where both men and women live, so we need to take care of the both genders, and we need to take care of it in media and technology industry as well. And as you rightly said, that media tech as a booming industry right now, as a new industry, so we need to take care of these things, and that is the reason we had your keynote as the first keynote of this international conference. Thank you so much. And right after this amazing keynote, we have yet another amazing keynote from the academia side. My teacher, my mentor, Professor Dr. Amir Said is with us. So I would like our host, Ms. Arfa Arbi, to formally invite Dr. Amir Said so we can listen to his amazing words. From my side, thank you so much, Ms. Mariam Khan, for your insightful and inspiring talk. We deeply appreciate your valuable perspective on the role of emerging technologies in women and guiding us toward a stronger, more inclusive future. Thank you once again for sharing your knowledge with us today. Our next esteemed keynote speaker is Professor Dr. Amir Said, a highly respected academic and professor at the Institute of Administrative Sciences at Punjab University. Dr. Said's research and expertise on the management sciences and imperialism has made a significant mark. Today, he will be addressing the topic of Western hegemony in media
an area that raises crucial questions about media power, representation, and influence on a global scale. Dr. Amir Said, the floor is yours. Assalamu alaikum. Do you hear me? Walaikum salam. Yes, sir, you are audible. Okay. Thank you very much for the kind words that you spoke about me. Before any ado, I move to my topic, which is already you have given me so very less time. So the topic of my today's talk is hegemony, Western hegemony on media. So when we talk about the media is basically a tool or technology to convey or impose your point of view over others. So more important thing to me as compared to media is knowledge, because media is just a tool and knowledge is the thing, your point of view, your perspective that you have and you want it to be shared or owned by everyone around us, because that is how you become powerful. So if we talk of knowledge, knowledge is basically anything, any piece of information that we have about our worldview, about our cultural ideas, about raison d'etre. These are the things that become the basis on which the whole society is formed. So if we take a snapshot of the Western history, because the whole media is in the hands of the West. So if we look around, go back to the Western history, you can find out that the Dark Ages were such a long time uh, where the Western society had to live under the hegemonic uh, control of clergy and nobility. Before Dark Ages, the first life of the West is considered to be the Greek era, and that is the first life, first civilization which they aspire, and they think that that was the golden era of their history. But then this Western civilization went through the Dark Ages, as they call it, and the shift, the epistemological shift was from man to God, because the church's claim was that whatever knowledge they have is coming from God. God is the originator of the knowledge, and under his knowledge and command and guidance, things should continue. But those who are familiar with the Western history very well know that the knowledge that they gave had some issues, and some scholars say that this was not the knowledge of God, rather it was the knowledge of the church, because that God's knowledge was somehow got adulterated or then was misinterpreted by the church. So during that difficult times, various historical events occurred, and I cannot explain everything in that small, very short time. So then this was a great uh, concept which we can elaborate or we can refer to, was the concept of geocentrism versus heliocentrism. Geocentrism was a concept given by Ptolemy in his book, and it was
somehow got into Bible and became the word of God, which was scientifically challenged and corrected by a Muslim scholar, Nasiruddin Tusi, later on when the book of Ptolemy was translated, and now Nasiruddin Tusi corrected it. Uh, that corrected version was read by the philosophers and scholars of the West who came from Italy to seek higher knowledge in Baghdad and other Muslim universities. And then they took that in piece of information to Copernicus. Copernicus identified uh, and agreed with the version of Nasiruddin to see that sun was in the center and uh, it was not the earth. Now, this scientific discovery was a very significant event because this thing somehow proved that science gives you a better gives you better knowledge about the world and society as compared to religion, because that geocentrism was seen or taken as a official version of the church. That was the first event which cracked, or that was the first crack in the hegemony of the church. And basically, it was the epistemology. And that thing then led to the shift of epistemological shift from God to man, because the Dark Ages were also called the city of God. The era after God spread throughout the world, and decided that Okay, so we were being joined by Professor Dr. Amir Said, who is a professor at Institute of Administrative Sciences, University of the Punjab. So as we all know that we are facing some internet issues over here, especially in Lahore. So I think that his internet connection just got broken middle of his talk. So we will move forward to our next activities. We formally thank Professor Dr. Amir Said for his valuable time. And now, today, in Shahruh Technologies Media Office, we are being joined by two esteemed guests. So one is Professor Iftikhar Rasool Sheikh, who is a senior media person. So he has joined us here in Shahruh Technologies office. So he's sitting just besides me. And I would like to invite Professor Iftikhar Rasool Sheikh so he can say some words to our audience. So most of our audience is from Pakistan. So I would request you to kindly वेलकम देम इन उर्दू लैंग्वेज बिकॉज उन लोगों को उर्दू ज़्यादा बेहतर समझ आएगी तो आई मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप हमारी ऑडियंस को एक दफ़ा वेलकम कीजिए सर जी अस्सलाम वालेकुम थैंक यू वेरी मच शाहरुख टेक्नोलॉजी फॉर होल्डिंग सच ए very important topic discussion, emerging trend in the media tech. आज के दौर में ये एक ऐसा मौजू है जिस पर सैर हासिल गुफ्तगू होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए ख़ास तौर पर
उन बच्चों के लिए जो आज के इस जदीद दौर में तालीम हासिल कर रहे हैं, राइट फ्रॉम स्कूल्स अप टू यूनिवर्सिटी लेवल, उनके लिए डिजिटल मीडिया में जो एजुकेशन है उस पर तवज्जो देना, और मीडिया में जो काम कर रहे हैं उन्हें इससे मुकम्मल आगाही होना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि 2 रोज़ा इस इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में, जिसका एहतमाम मिस्टर हमद सईद, CEO शाहरुख टेक्नोलॉजीज ने किया है, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को और नए से नए सब्जेक्ट और नए से नए मौज़ूआत की आगाही होगी, और अक्रॉस द ग्लोब the all participants on the all listeners will be properly benefited from this discussion, as well as the persons, the listeners, the viewers who are in Pakistan and their mother language is Urdu. They will be also properly benefited from this discussion. My thanks to Mr. Hamid Said and his team. All the persons are very important and they are very devotedly working for the success of this important international online conference. So congratulations to everyone. Without naming the persons, that means all of the whole team led by Mr. Hamid. Congratulations. The best wishes from Iftikhar Rasool for everyone. Thank you so much, Professor Iftikhar Rasool Sheikh, for your kind words and welcoming all the esteemed guests to this international online conference. So we are being joined by Professor Dr. Amir Saeed again. So he has joined us back. So I would request him to kindly conclude his conversation because he was in middle of something, but then internet broke. So sir, mic is yours. Kindly take over. Yes, do you hear me, please? Yes. Okay, so I will continue from the where I ended. So the Nietzsche basically claimed that God is dead because the word of God or the knowledge of God or whatever was ascribed to be God's knowledge was removed from the society and it was replaced by science, because science in as a method has proved to be a success in the physical sphere of life. So when the society decided that they will say no to God or any knowledge coming from God, so they had to develop knowledge about the society and man. So then this led them to use scientific method for the development of knowledge about man and society, and that knowledge is now called social sciences. So this knowledge then led to this method then led to the development of economics, political science, sociology, psychology, and all the knowledge. And then this society, from there emerged different ideologies. Ideology of capitalism, which came up with its own worldview, its own cultural ideals, and its own raison d'etre. And then it was in competition emerged the ideology of socialism. So this knowledge, this piece of knowledge that was developed throughout this history, now there was a need for conveying of these ideas and message to the whole world, because before that, due to the lack
since there was absence of mass media, the messages could not have been conveyed. But when they identified this method, this ideology, and then they decided to extend or export that ideas to the other parts of the world, then first they went themselves through colonization, through voyages, through expeditions. They went to Africa, Asia, South America, and other countries and other continents, and they occupied them. And then they needed that media as a strong tool to convey their knowledge or the ideologies, because the ideologies, there was a competition of ideologies. So the one who had best form of media or had best state of the art media, they could use that to propagandize their ideology and can overwhelm other ideologies. So this ideological competition was basically the basis of the emergence of media, and of course the need to share ideas with people and to convince people about the truthfulness or the falsehoodness of a particular thing. So this led to the advent of mass media, print and electronic, and then came the internet. Now, everyone of us is very clear about this, that internet facilities, technologies, equipments, they're all produced in the Western societies, although certain countries like China, Korea, and Japan, etc., have entered in the field, but still there is the hegemony of this control of the development and distribution of the facilities in the hands of the West. And the whole world is playing on the field of the West, which has developed their rules, which decide which content will be conveyed, which will be blogged, which will be shared, which will become a viral thing. So yeah, this control of the media is basically is a tool in the hands of a specific civilization who just want their ideology to be exported and available to everyone on the world, and any competing ideas or philosophies should be stopped or blocked, or uh, their spread should be limited. And when we talk of this technology, that is AI, we can now very well, most of you very well know that the personal information that we share on our devices is no more private, it is now public. And this AI thing can use this personal information to create fake videos, messages, and content, which can play havoc to the world, the societies, everything. The future of a individual person can be devastated, or so many propaganda things can be done through AI that is very well known to everyone. So the scope of propaganda, exploitation, and hegemony of a particular ideology of the rest of the world is now boundless. A particular ideology can exploit the rest of the world in boundless manners, boundless ways. So I will conclude with this statement that the globalization is in fact westernization and Americanization. And when the ideas coming from the West are promoted through the use of media, we can very well conclude that although it appears to be a very open and free world, but in fact, the control and this hegemony over media basically helping a particular ideology
the ideas of particular ideologies to be expanded and exported to everyone, and any competing ideology or ideas that are against the fundamentals of the Western society or culture, they are stopped. So with this, I would thank the Shahruh technology for giving me this opportunity to share my thoughts with the esteemed community. Thank you very much. Thank you very much, Professor Dr. Amir Said, for valuable insight on AI and the Western hegemony, how it is gonna change the things. Right after this panel, that was more on academic side of it. So right after this panel, we have another panel discussion that is related to the tech side of AI, that how it is gonna revolutionize the media technology and the related technologies around it. So we are being joined by Dr. Wasim Ahmad Khan, Dr. Taiba Farhat, and Mr. Sajjad Haider, who is CEO of Human Meta Tech. So I would like our event host, Mr. Farbi, to formally initialize the panel one proceedings. Thank you very much, Professor Dr. Amir Said, for sharing insights on Western hegemony in media. Your valuable perspective sheds light on the dynamics shaping the global media landscape and challenges us to think critically about influence and representing. We are grateful for your time and expertise. Now, I'm very excited to move into our first panel discussion of the conference, titled Role of AI in Media Tech. This panel will explore how artificial intelligence is transforming the media industry, reshaping everything from content creation to audience engagement, and what this means for the future of media tech. Moderating this panel is Mr. Hamid Said, PhD scholar in administrative sciences and founding CEO of Shahruh Technologies. With his extensive background in business and technology, Mr. Hamid will guide this important conversation with our panelists. Mr. Hamid Said, the microphone is. Thank you very much, Ms. Arbi, for the kind introduction and introduction of panel one that is primarily on role of artificial intelligence in media technology. So I will start this panel proceedings with the formal introduction of my esteemed panelist. So with me is Mr. Sajjad Haider, who is the CEO of Human Meta Tech, a very good friend of mine, just like my elder brother. So we are really thankful to you for joining us today in this international online conference. We have Ms. Taiba Farhat with us, who is the program manager ID 92 at Superior University, Lahore. And along with her, we have Dr. Wasim Ahmad Khan, who is again my teacher. I used to study with him in PUCIT back in 2012, 2013. So I formally welcome Dr. Khan in this panel. So we realize that there are some internet issues, so it's perfectly fine if you guys don't want to share your video. We are more eager to listen you, and even if something happens in between and you want us to take you on call, so that is perfectly fine, right? So just let us know if that facility is required. So yeah, so I will start with my first question from Mr. Sajjad Haider, because this question is primarily more related to tech industry. And Dr. Khan and Dr. Farhad, they are primarily focusing on the academia side of AI. So I'll start with this question. How can media companies use AI to streamline, their content distribution? Because these days we are seeing a lot of content being online, and then there is a big question of information and misinformation. So we are already fighting this a battle of information and misinformation, and especially with the AI coming into advent. So how we can, differentiate between this information and misinformation era, and what strategies can a media tech company take to win this battle? So floor is yours, Mr. Sajjad Haider. You can introduce yourself in a way better manner as I did, and you can answer the question, please.
Thank you, Hamid and Shahruh Technologies for providing me, such opportunity to speak with, some of the key with the key people from the academia and the media industry, and also, to the audience, which is interested in such topics, which is actually a much needed topic, and being there had been a need to talk on this topic, but I didn't see much on this. But since I'm today representing technology side, and also as a CEO of a technology company, of a small technology company, the need of AI is more visible to us, and we are meeting our challenges with the help of AI. So as you said that how the media outlets or the industry can cope with the challenges uh, which are arise due to the use of AI, or how we can use the AI to cope with such challenges. We can see that there are a lot of platforms, and I would, since I'm from the tech side, so I would like to, start from the major tech platforms like Netflix or YouTube, or the other social media platforms which are distributing a lot of content from the content creators. And there is a lot of misinformation, and there is a lot of content on these platforms. So these companies are actually using AI as their tool to cope with such challenges like deep fake, or to prioritizing the right content, or to bring their audience, or to distribute their content and prioritize, and using analytics and different algorithms. So such companies are already using such tools with the help of AI. Like all the parties which are involved in this channel, like from the content creators to the companies at the platforms, or even the media outlets who are everyone is using the AI to meet their purposes. But one thing which I want to articulate, or I want to emphasize, is that the AI is a friend. We need to look it as a friend of everyone. What we need to do is to make sure that it is being used ethically, and as per we need to build the trust of our industry on the AI, so that the industry can use the AI for the betterment of their audience and all those their business challenges. What we need to do is to train our teams, our human resources. We can achieve the goal of authenticity and building trust with our content and the content creators and for the audience. And also, I think the answer to your question is that we need to train our teams, and we need to consider the AI as a partner and not as a competitor. So I think this is how we can cope with such challenges. Awesome. Thank you very much, Mr. Sajad Haider, for your valuable insights. And yeah, I believe that we need to be a companion with AI, rather being devastated by its impact. Because I remember whenever some industrial revolution come, people are afraid of it, right? So to answer this, we have people from academia with us who are either doing their PhD related to AI or have done their PhD related to AI. So we have with us Dr. Wasim Ahmad Khan, Dr. Taiba Farhat, and we are also being recently joined by Ms. Rabia Wakar, who is handling the startup side of it. So I will ask this question to Dr. Wasim Ahmad Khan. So, sir, there is an ethical side of consideration while using AI, right? So when we use AI in media technology, so as Quran Majid rightly said, दैट कि आपके पास जब भी कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से तहकीक कर लो, मुबादा तुम्हें उससे नुकसान हो। तो इस हवाले से अब ये जो द काइंड ऑफ AI algorithms we are using, so we are not 100% sure either they are giving us false results or true results. So how, as human, we can make an interaction with AI, and how we can make sure that the response, the kind of response we are getting, is accurate or not? Thank you so much. You invited me in the online session here. And
I really appreciate your question. Can you listen to me? Yes, sir, you are clearly audible. Yes. First of all, I would like to start my talk with the line of ChatGPT can make mistakes. Check the important info. Even you have read this information in whenever you use the ChatGPT. It means even you are using the ChatGPT is not rely on the information what they are providing us. That's why AI is a whatever the solution, but we cannot rely on these type of solutions. Even we have a lot of information, but we need to verify. Even we can easily transform into the cybersecurity field as well as because it is just one domain. What is basically the era in 2015 to 2035. That is basically the era in which the AI can have the hype, and we will see the projects in the AI. And whenever we will move on the artificial general intelligence, we will see we can easily uh, transform our information into the valuable information, where that we can easily show the valuable results and insights to the customer or consumer or the audience as well. And there are a lot of issues in the deep fake as defined by Majid and he Sajid Haider. Sorry, he said well info about the uh, deep fake, because it is very challenging to in this era to identify which one is the right and which one is not right, and we need to verify the information as well. And how we can verify these information? First of all, we cannot rely only on the AI services in the media tech. We need human cooperation as well, and we can use the human intelligence in the field of media tech as well as, and we can use the hybrid approach. What I am telling to you the right answer. Awesome. So thank you very much, sir, for answering this complex question in quite an effective manner. So I was expecting the same kind of response from an expert like you. So thank you very much for this answer. And now moving forward, I have a question from Ms. Taiba Farhad, who is a manager at ID92 by Superior University. So, Ms. Farad, you are dealing with multiple startups working in various domains. So, some of them might be working on AI and some of them might be working in media technology. So, I would like to ask you that are there some startups here in Pakistan who are working in these kind of technologies, and how you think that they can revolutionize this sphere? So, any suggestions, any comments, any concerns even are more than welcome. So, floor is yours, Dr. Farad. Assalamualaikum. I hope you all are well, and thank you so much for inviting me to talk on this topic. I hope my video and my audio is clear. If yes, then I'll go ahead. Yes, it is. Okay, so first of all, I would like to talk about what is AI. So most of the people think that ChatGPT or Jasper AI, they are artificial intelligence. This is not artificial intelligence. Artificial intelligence is a very broader term. Machine learning is a part of it. Then comes the deep learning, and within the deep learning, we have large language models, which comes under generative AI. So whatever we are seeing today in terms of ChatGPT, or we are using Gemini, Jasper.ai, they are basically large language models. They are trained on a large data set, and they are producing data on the basis on based on those data which is used for their training. So whenever you are using ChatGPT or Gemini or any kind of AI-based software, you are basically asking the generative AI to generate some responses. So first, there was a concern that we need to confirm that whether the information we are getting from ChatGPT or Gemini is correct or not. So I would like to share here that
ChatGPT and Gemini are basically generative AI large language models. That means they are generating information which could be fake. They are generating information. They are most probably giving you the references which are not original or which doesn't exist even. So this is the side effect of LLMs, which comes under generative AI. So if I talk about what benefit we can get from AI or what benefits we are getting from AI is that we can use this for content creation, news and journalism, marketing and advertising, and social media. So there are so many tools which can be used to generate or create content, but we need to verify the content as well. So what my suggestion is, first you have all the correct information, facts and figures, then you can give those facts and figures to ChatGPT or Gemini and you can rephrase it. You can ask ChatGPT or Gemini to rephrase and add keywords for for the SEO purpose. So the concerns we are facing using those AI tools is ethical concerns. We have, we have potentially lower rate of employment due to AI tools because AI is basically replacing human resources. We can see that we need people who are who are more comfortable using AI tools. So AI is a basically buzzword. Every company which is claiming that we are AI based, we are providing AI based solution. Basically, they are adding ChatGPT or Gemini in their chatbot whatsoever. So we need to confirm the accuracy, and we are more dependent on ChatGPT and Gemini for our content as well. You can see on LinkedIn, people are generating content on ChatGPT, and they are sharing the post. They don't even know how to create a post or how to write an email nowadays. So if I talk about the startups I am dealing over here, yes, the need for AI tools is very important. Even for social media posting as well, you can ask ChatGPT to create a 1 month plan for posting, and it will create a plan for you. But you need to understand what do you need for your particular startup. So we have 3 or 4 startups who are basically AI based startup. They are creating some kind of softwares which are gonna help researchers, just like ChatGPT is doing, or just like Gemini is doing. But it is a more lightweight, so that you can anyone can install it in their phones as well. So I have so many concern related to large language models, particularly they are biased because the data which is being used for training these large language models is biased. So whatever we are training those large language models, they are gonna give that back to us. So AI is not LLMs. ChatGPT is not AI. This is just a big data set, and you are asking that LLM to create some content for you. That's all from me. If you have any question, we can continue this discussion as well, because we are here to discuss concern and opportunities using AI. Perfect. Thank you, Dr. Farhad, for your valuable insights. And I have a leading question that I believe any of you panelists can answer. So we have discussed more about the startup side of it and the content creation side of it, that how people are using AI and language models to create content. But how about the consumption side of content? Are we using AI as a content consumer? Are we using it to personalize our kind of content that we are looking for? Or is it just the platform dealing with all that for us? So I believe that Mr. Sajjad can answer this question quite effectively because his company is already dealing with Meta Tech. So Meta Tech is quite similar to Media Tech. So I believe that Sajjad Bhai can answer this. Please. Thank you, Hamid. So as far as my understanding of your question, yes, we are, consuming the content generated by the AI, and AI is, as the last speaker, Dr. Farhad said, that it is consuming the content. So it's a cycle. Right now, it's a cycle which is, going on. But again, from all the discussion, what I want to again emphasize is that that AI is, we need to see AI as friend of us, okay? But what we need to do is to
is to make sure that there are certain principles which make sure that it is ethical and under certain checks and balances. So this is what I want to say. And as far your question is concerned, I would like to say that yes, we are consuming the content and AI is consuming our content. So I want to discuss a small project which we delivered last year into MENA region to a KSA based client. Like they had a requirement that they want to have such technology or such intelligent tool for them, that whoever is posting something on Twitter, now called X, their tool should be capable of replying them with a Quranic verse or a verse from the Bible. So at that time, we were also new to the AI, but we tried our best and delivered that technology to our customer. But what I would like to say that, as per my understanding of your question, it's a cycle that we are generating content from the AI, and AI is also being trained on that content. Now we can see that the capabilities of the models are increasing every day. So the interaction of humans with AI is the thing which is doing all the miracle thing. Awesome. Yeah, so just a leading question. I believe that Dr. Wasim is quite interested to answer this one. As we can see that AI is learning from us. So we as human, we use slangs. We use daily life language. We don't talk in a very professional manner. So is AI learning that kind of casualism from us? Yes, of course, AI is having the adaptability and is perceiving our behavior as well. And because whenever we are talking about the artificial general intelligence, it means we will see the application that can behave like human and behave like in general terms, that cannot specific only on the very specific and narrow services or what we have seen in this era. And then I think Dr. Wasim has lost his internet connection. So the next question is quite similar, and it is from Dr. Taiba Farhad. So can we see some startups sending you an we email can in coming days solve saying multiple that, okay, problems Dr. in Farhad, I don't the want to with the cover one today. service. Sorry, please. Yeah. Dr. Wasim, there is a lag. Okay, Dr. Farhad, can you hear me? Yes, I can hear you. Dr. Wasim was talking, so Okay. I was waiting Yeah. for him. Okay. Okay. Sir Sajjad shared a very important question over here, that he created a software or a system which can answer on the basis of Quranic verse or Bible. So I'm sure that he created a system which is not a generative AI, but a descriptive AI. That means it's not able to create something of its own, but it's giving the answer on the basis of what is being fed to that AI. So this is a very important thing. And about the consumption of AI, yes, it is a cycle, because we are using AI based softwares to create the content. Then we are again posting that created content on the social media. So we are the biggest consumer of the AI softwares as well. And then after creation, we are posting that content over social media. And one again negative side, which is which I have observed, now humans are not that creative. The reason is that we don't read articles, we don't do research, we just put the question on ChatGPT and Gemini and we get the answer. So due to this, the new generation, or we can say Gen Z or alphas, they are not so creative. They don't know how to do the research, read books, reading articles, going through the Wikipedia and all the websites which we were used to do. So we are becoming less creative. Yes, AI is our friend, but we need to see how we can teach the younger generation that use it as a friend, not do not depend on these platforms as well.
So if I talk about the startups, for startups, it's very important to understand how they can use AI tools to create plans for the sale, how to do marketing. They can learn, they can get a plan using AI. Even they can code using AI, but the code ChatGPT, Gemini, or other tools are providing, it's not correct. Once they give you a code and you will say, no, you are wrong. They will say, oh, I'm sorry, and then again they will give another solution to that question. So even if they are right, they are going to accept that they are wrong, and they will provide another solution for that. So it's not reliable, but they are your good assistant. That's my say to this question. And I advise this to all startups and students as well, that don't rely, don't depend, but use these AI tools as assistants. Okay, yeah, cool. Perfectly fine. Yeah, so we need to use them as assistant. So Dr. Wasim, you were in middle of something. You were telling us some valuable insights. So I would like you to please continue. Yes, I really agree with both of them. They are talking about because it is just a service, and it is just a we can use as a friend or assistant, and because everything has a right and wrong uses, and it depends on the user. Uh, because it is just a service, and it depends on us how we can use these type of services, and how we can use the information from retrieving the AI. Either we are providing the information to the AI algorithms, and we can get the information from the AI. Even we are providing the information to the AI that is 100% more than 100% correct. But what we can perceive, what we can get the information from the AI, that is less correct as we have provided to the AI. So that there are the some error rate, and there are some cushion in the results that get from the AI. So we need to active whenever we receive the answer from the AI, and before the decision making, we need to read out, verify, and then evaluate the results, and then we will make the decision what we have received. But one thing is, we need to use the AI as a tool that can help to us. AI just, I think, is just a tool that can help to work uh, very efficiently, and not pure correctly, but we can do with efficiency. Perfect. Rightly said by Dr. Wasim and all the esteemed panelists. So I have just a last concluding question. We are seeing an era where almost every startup is integrating AI. So what about the jobs of the people in media industry? Are we seeing any change in the job of journalists, content creators, the reporters, the people behind the camera? So is there any change that we are going to see? So anyone can answer it. Starting from, I guess, Dr. Wasim. Okay, I would like Yes. to add from Yes, please. from here. If I talk about the freelancers, the freelancing industry, how to capture the client, that is a very important thing for any freelancer. So if you get any project, it was initially very difficult to write a good proposal. So now you know what you can do. Give that to ChatGPT or Gemini, and it's going to write a very good proposal for you. You need to have the content. These AI assistant can write a very good and appealing proposal, and then you can submit that to your um, can you listen to me? Yes. Okay. Yes. Okay, so you can post that. Communication with your clients is now very well organized if you know how to use those AI tools. So it is helping freelancers. It is helping people who wants to get projects. And if I talk about the jobs of content writers, yes, AI can replace that, but again, we need to monitor that the data being provided by ChatGPT or AI tools should be correct and authentic. A very good, very good research that I made on ChatGPT initially. That I asked ChatGPT to give me references to each and every fact it was quoting.
So it created false and fake references as well. So we need to see what it's giving to you, because it is generative. It can generate things which is fake. So it can take over the job market, but still we need some human beings to monitor, to vet the information that is being created. Right, absolutely right, Dr. For Fahad. When for you were media talking tech, about, for media tech, yes, please. for MediaTek, we have Midjourney. We have Dali, which can create very good videos. Premium version can even create virtual influencers, and you can create anything using those platforms as well. So in MediaTek, yes, we have so many options which can take us to another level of media, but still very ethical use and less dependency. Creative mind is required to use these AI tools. Absolutely right. And I was just mentioning that while you were talking about this, I could clearly see smile on faces of all the panelists when you said that you asked ChatGPT to write references and it just created references on the air and they never existed. So I could clearly see smile on faces of all the panelists and even on the faces of those who haven't turned on their camera. So we are being joined by Ms. Farha Rashid, who is also a PhD scholar at Minhaj University. So I can clearly see that she might be smiling at that time because we as researcher, we are going through that. And I would like to ask Dr. Wasim, are there any particular tools? Well, I know about them, but I want my audience to know about them. That's why I'm asking you. Particular tools for researchers to perform their literature review and citations. So have we developed some tools for that? Yes, there are a lot of tools that can help to the researcher in the right way, that can reduce the time, and we can easily analysis on the multiple papers, using the multiple researcher softwares as well, to review the multiple papers and save the references as well. And as well as we can agree, it is generative, and it can generate the false information as well. Even we can verify it has generated the false references. It means it can generate the false analysis, false analytics, and false information as well, in the content of what we get from the AI. Even when we can, but I believe if our prompt is strong, refined, and we can receive the very well information, and it is just a game. I think what we have put the prompt to the AI. And I also agree that ChatGPT is not only the AI. It is just a service of the AI. It is a one service of the AI. It is the one chapter of the AI. But the AI is very vast thing. As you can see, the IT is the very vast domain, and AI is the part of AI, a part of IT, but it has more potential to automate the things. Even one of my students had automate the freelancing website, freelancers.com, with developing the extension of the Chrome. He had the paid version of the freelancer, and generate and integrate the chat gpt with that module. And he get the clients automatically, because whenever the new post with the specific type of keywords, the AI bot can answer and submit the proposal to all the clients. And if the client has serious and replied them, then the user can easily connect to the client. And it was really amazing. 1 year ago I saw this type of application, but we are not limited to just get the information from AI. It is the part of the automation, and we can use the services of the AI in the automation. We have the less work, and we have the advanced work
to verify the multiple and advanced algorithm of the AI. We are not limited with to receive and write the prompts. Even I am trying to write the prompts using the chat GPT. I tell the all matter to the AI and then tell them I have no skill to write the good prompt. Can you please write the good prompt for to get the such type of information? And even ChatGPT can reply to me the better prompt that can help to me to get the best output from the models. Perfect. Thank you very much, Dr. Wasim Ahmed Khan, for your prompt response, and it was quite comprehensive. I believe, yeah, that you have concluded all the panel discussion in that last answer. So you have made my life quite easy. Thank you very much for being a savior once again. So you are being a savior since 2012. So a bundle of thanks for being that. And as we all know, there is a proverb in Urdu that says, "Usko chutti na mili jisne sabak yaad kiya." So this panel one, this has raised the bar quite high for our upcoming panels, and I'm gonna tell you guys that आप लोगों को छुट्टी नहीं मिलने वाली. आप लोगों को अब हम और तंग करेंगे अपनी upcoming conferences में भी, because you guys have done a fabulous job talking about the role of AI in media tech. Because the purpose of this conference, so I would also like to talk about that in presence of you guys. So Shahruh Technologies, as a technology company, is organizing this particular conference as a pre-launch of our media tech platform named Innova TV, Innovation Television. So the sole purpose of this media tech conference is a pre-launch of that particular platform. So we are gonna need a lot of services and guidance from you guys, from Mr. Sajjad Haider, from Dr. Taiba Farha, Dr. Wasim Ahmad Khan, Dr. Farha, all the amazing people. We are also being joined by Mia Abdul Rashid Sahab, who is a very senior committee member for Agriculture Task Force. He has worked on human rights, and he is also a technology enthusiast. So we are going to need his services as well. We are being joined by a young talent, Mr. Sylvester Joseph, who is a CEO and co-founder of Seljo IT Products. So we are going to need a lot of services from you guys. Just hold on and just be with us, be a well-wisher of Shahruh Technologies, as you guys have always been. A bundle of thanks to all of you for your valuable time and for the valuable insights that you have shared. I'm really in debt to your services, and inshallah, we are gonna make it a good platform, a good identity from Pakistan, because we have heard a lot of bad things about Pakistan. Some of them are happening right now here in our country that we don't want to talk about because this is an international conference and an international audience is listening us. So we are not going to go in the negativity, but the people like you, the people like Mr. Sajjad Haider, the people like Mr. Iqbal, the people like Dr. Wasim, people like Sylvester, you guys really actually make me believe that this country can prosper, this country can do wonders, this country can go beyond the limits. Okay, fine, we have certain shortcomings, everyone has, right? So no country in the world has separate from them, everyone has their shortcomings, but with especially this particular era of technological boom. So we saw Sajjad Saab can uh, connect with that we heard about fintech. Everyone was working on fintech. We heard about blockchain. Everyone rushed towards blockchain, and now AI came, and everyone is like AI, AI, AI. But we are not trying to integrate them with our daily lives, right? So this time, I'm really happy that people like Dr. Wasim Ahmad Khan, they are talking about how we can integrate AI in our daily lives, how we can integrate it with like media tech, how we can integrate it with health tech. So people like Mia Abdul Rashid Saab, they are working in agriculture sector, and they are very vocal about how we can integrate it with agriculture sector of Pakistan. So this is the kind of response we wanted to generate, and Alhamdulillah, thanks to Almighty Allah, praise to Almighty Allah, we have done that. A bundle of thanks to all of you. You guys are more than welcome to join us in the rest of conference, but the panel is concluded here. Thank you very much. Take care. I will be handing over the floor to our event host, Mr. Farbi, for the next proceedings of the event. Thank you very much, guys. Thank you so much to our esteemed panelists and Mr. Hamid Said for a thoughtful
thought-provoking discussion on AI's role in media tech. Your insights have truly enriched our understanding of this dynamic field. Now I'm delighted to introduce our next speaker, Mr. Sylvester Joseph, the founder and CEO of Sergio IT Products and Services. Mr. Sylvester is a visionary leader in the tech industry, and today he will be sharing his expertise on AR, VR, and AI in media tech. This promises to be a fascinating exploration of how these cutting edge technologies are shaping the future of media. Mr. Sylvester, the screen is yours. Hello, everyone. Do I Yes, am audible to you? yes, Sylvester, you are. Please go ahead. Okay, so just let me set up the things. Sure, take your time. Is the screen is showing to you? Yes, it is visible. Okay. So the my name is Sylvester Joseph, and I am the founder and CEO of Siljo IT Product and Services. So like recently we have discussed. Okay, so the topic which I have like received. So like augmented reality and VR and AR transforming in media and technology. So if we talk about today in today medias, so technology is like really booming in changing different things. Okay, a world is transformed with technology. We imagine like Sylvester, you are not audible. Can you please check your okay, okay, microphone? so Yeah, now okay, you are so audible. no, I just getting the like a setting up Okay, things. okay, cool. Go ahead. Okay, okay. So like how many of you have heard about immersive technologies, augmented reality, VR, augmented reality, and artificial intelligence? So like first of all, we just need to think our like how AR and we are enabling audience experience of storytelling of for the new perspective. For example, we are documentary like Cloud over Cinderella provided empathy-driven storytelling by immersive viewers in a refugee's life. So there are many industrial there are many stories which are now being telling in the form of augmented reality and in the form of virtual reality. And VR and AR together makes things immersive. So like VR is just the gateway to immersive digital world, and augmented reality is the bridge that enhances reality with digital overlays. So in simple, we just going into the immersion by getting by having the headset, different headset we use for the VR. But augmented reality is totally different. From our smartphone devices, we can use and we can like a overlay in our digital world. So like augmented reality newsrooms are integrated with the
AR and VR for interactive journalism. For example, for the newsroom to utilize the graphics like if we consider we are talking about the uh, if we like there is a news about something, so we as a viewer we can go into that scene, and we can have that thing we can feel and we can experience the reality, the visual by using augmented reality and artificial intelligence by VR and AR. And brains that makes we recommended system we have that in immersive technologies. So augmented reality was begun, or virtual reality was begun like affordability, like when the Oculus rectifier was developed. And after that, augmented reality was we have the example of Pokemon Go, and recommendations all of us have from the background of AI and artificial intelligence. So the first recommendation system in the Netflix, so that is the media is using and having these things. So the immersion immersive storytelling is the new way of the media industry, and VR enables the viewers to interact and to have that scene he can go in that place. For example, if there is a rally of something, so he can experience that thing by viewing and by using that headset, or by viewing it in his mobile phone. So that is the interactive advertisement, also the part of it, and AI enhanced creativity. So we don't need to rebuild the things. We have the tools which can help us to create the graphic designings, the video editing tools. So that will be the for making things more immersive and more fast. So we can use AI enhanced creativity, like we can use the script writing, graphic designings, and video editing. So the industry benefiting from the VR and AR, that is the film and entertainment, journalism and social media, and as well as in education, there is very big scope of it. So by incorporating these three technologies, we have the we can have different uh, domains as well in it. So like from the film and entertainment, virtual set reduce production cost and enable fantasy storytelling. So in journalism, the AR and VR being audience to the heart of the story, be to the words or a scientific breakdowns. And in the social media, AR filters, maybe you have used, all of us use Snapchat and TikTok filters, and every social media applications now have the filters which are AR enabled. So that is also the very big industry and for the content creation and for the content market. So content market and content creation is going to be the next big giant in the tech industry. So that is while using augmented reality and VR and AR, so that is changing the perspective of the content that we use and that we see in our daily life. So that is going to be change in next 4 years or 5 years. Maybe we have also experienced this thing in our daily life. We have a social media that is all over on AR and VR, AI driven personalized content on the TikTok, on the Instagram. So that is all by using AR and VR we have in this industry. So everything has a flaws and everything has have this thing. So it has a little bit high cost because of the hardware which we use, the VR headset. So if we eliminate this part, still we can do this by using the augmented reality AR.
So for AR, we just needed our mobile devices for viewing uh, the story and the content by on our own smartphones. So that is also the different way of doing it. And we have the emergence of this, like we can use the mixed reality, the extended reality. So it is the mix of VR and AR. So that is also the path. So like for right now, the in AR and VR, that is the high cost of adoption. So that is the very big challenge for us for the in AR and VR, the cost of hardware facilities and technical limitations of a heavy VR set and limited AR capabilities. And for the privacy concerns, there are also many concerns about the leakage of the data. So the vision of the tomorrow is AI driven content creation. So we have seen now the I am searching about the faceless YouTube channels, how we can create a faceless Facebook channel. So that is are going to be the next very big industry in it. So AI driven content is the more accessible and more useful than for hiring a content writer and giving him the things. So that thing will be done by the AI. AI is doing very fabulous job, and this presentation I have also created on the AI. So that is the content creation and the part of all of the media is going to be pipeline in one device, and that is controlled by the AI and managed by the AI. So that is the vision for the tomorrow. And the of the AR of affordability of AR and VR headsets. So that is the very big challenge in this industry. And for the combination of these all technologies and with interaction, so like the metaverse, we can create a very uh, uh, like a newsrooms could be in the metaverse. The concept of newsrooms metaverse is going to be the next vision. So that is the empowering the VR and AR opens the possibility for creators to push boundaries, content that capability and engage never before. Technologies for the media, that is the globally we can expand it, and also these technologies integrate for the media industry, for the creating new jobs, for the opportunity for the innovative world. So that is the also driving economy and growth. So that's from me. So like in Pakistan, we have just built the first try on feature, which is the like mostly people are using it in augmented reality. So this is my own product. So like I have created this first ever in Pakistan. So that is the try on feature, which is live on my client side, augmented reality, pk. So in the e-commerce, it is like a different shaping, like creating the impact in it.
So in e-commerce, so there are many like a use cases of using augmented reality and using AR, VR in media industry as well. So that is from my side. Thank you so much, Sir Hamid, for giving me a chance to speak on the augmented reality. And like I am very happy to be the part of this conference. Thank you so much. Thank you very much, Sylvester, for a wonderful presentation. And it was really insightful and it was practical. So I always encourage youngsters, being a youngster myself, okay, yeah, so no worries about that. So I always encourage youngsters to come forward and showcase whatever they have done, the fabulous job they have done. So while Sylvester was showcasing the glasses and he was wearing the glasses using VR, that was an awesome experience. Seeing a guy who started his journey as an intern at Shahruh Technologies and then as an employee at Shahruh Technologies and then a CEO of his own company, Sergio IT Products. So it's really encouraging and fulfilling experience for me. And Sylvester, there is more to it. You are being joined by one of our combined mentors, Mr. Farhan Riaz Saab. So he was also here to listen to your presentation. I personally requested him to listen your presentation. So it was quite a wholesome experience for me, and I believe it would be for you as well. We are also joined by Mr. Zain Naveed, who is senior producer at Dunia News, and he is also uh, a consultant with Shahruh Technologies as a media advisor. We are also being joined by Ms. Zaida Kadri, who is working as a research associate, a research analyst at Shahruh Technologies. So this is a time to say thank you to all of the people who are the part of this ceremony for quite some time now. So we started it at 2 p.m. Pakistani time, and it's 3:45 p.m. And all of you are with us till now. Really thankful to all of you. So we will be starting our panel two shortly. That panel will be primarily talking about the need of high-speed internet uh, for media tech startups. So as we all are struggling with internet connectivity issue today, so I believe that this is the high time to discuss this topic. So this panel will be moderated by COO Shahruh Technologies, Mr. Majid Kadri, and we are already being joined by Sir Farhan Riaz, who is one of the panelists in this amazing panel. And shortly, we will be joined by other panelists, and then we will be formally kicking off this. So meanwhile, I would like to talk about some initiatives that Shahruh Technologies is taking for media tech. So firstly, there is Innova TV, Innovation Television, that this ceremony is a pre-launch of. So about Innova TV, I have talked about that this is gonna be a first of its kind media tech platform here in Pakistan. As secondly, Shahruh Technologies has started its YouTube channel quite some time ago, and we have been able to complete almost 1,000 quality videos on that channel. So a big shout out to Shahruh Media team for that wonderful performance, 600 large videos and 400 short videos in such a short time and creating a huge impact. So a round of applause for Team Shahruh Technologies for doing that. Secondly, there is an initiative called Bani Kahani. So this is the stories of unsung heroes of our society. हमारे वो फाउंडर्स, हमारे वो बानियान जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं अब इस माशरे को सुधारने के लिए. They are tirelessly working. They are working day and night to make this world a better place to live and to make this society a better place. So to celebrate those people, we have started Bani Kahani, the stories of unsung heroes, the stories of founders. And this ceremony is again the launching ceremony for Bani Kahani as well. So a big shout out to Bani Kahani, who is also the sponsor for this International Media Tech Conference. So a short animation of Bani Kahani that is the logo of Bani Kahani. And I have already given you a short intro that Bani Kahani celebrates the success of founders. So here it is. So whenever you hear the word Bani Kahani, please remember that this is the initiative of Shahruh Technologies, and Shahruh Technologies is working on it and is trying to bring you something amazing, right? So right after that, I am also gonna and
congratulate Team Shahruh Technologies for doing it and thank our partners, right? So in our partners, we are being joined by multiple startups uh, who helped us as design partners, as outreach partners. So first of all, I would like to thank Fashiony.pk, our outreach partner. Fashiony.pk is an online marketplace celebrating artisans by providing a platform for jewelry, printings, paintings, art, and craft pieces. So Fashiony PK's dedication to promote creativity and craftsmanship is truly inspiring. Thank you, Fashiony PK, for being with us. Then one of Shahruh's own startup, my baby, Printable.pk. So thank you very much, Printable.pk, our design partner, for being an innovative online marketplace connecting vendors and customers to facilitate seamless buying and selling. So your platform is helping to build a thriving digital economy. So there are more partners, but I believe our host for the day, Ms. Arfa Arbi, I would like to thank them just before we start our panel two. So floor is yours, Ms. Arbi. Thank you, Sylvester. And now we would like to say heartful thanks to our valued partners whose support has been instrumental in making this conference possible. A special thank you to Fashion.pk, our outreach partner. Sir Hamid explained it. And next is thank you to Printable PK, our design partner. Printable PK is an innovative online marketplace connecting vendors and customers to facilitate seamless buying and selling. Your platform is helping to build a thriving digital economy. Thank you, Printable PK. And our gratitude also goes to Innova TV, our media partner. Innova TV, a cutting edge media tech platform that serves as a resource for media professionals and institutionals alike, fostering knowledge and collaboration in our industry. To each of our partners, thank you for our invaluable support, innovation, and dedication to creating positive change. We are truly grateful to have you with us to this journey. Thank you, Ms. Arbi. Here is the organizing team of this amazing international online conference. So I would like to personally thank each and every one of them. So Mr. Majid Kadri, COO Shahruh Technologies, has been tirelessly working to organize this international conference. Ms. Arfa Arbi, who was just with us just before I started talking. Mr. Zain Naveed, media consultant, Shahruh Technologies. Mr. Ishtiaq, who is behind the camera even right now, but has done an amazing job for this conference. Muhammad Amjad, social media team of Shahruh Technologies. Umayali, content analyst of Shahruh Technologies, and Ms. Zahida Qadri, the research analyst of Shahruh Technologies. So a bundle of thanks and a huge shout out to the organizing team who has tirelessly worked together this amazing galaxy of superstars. So we are joined with all these amazing people from academia, from industry, from media, from startups, from IT companies. So all across, we are being joined by these 50 plus amazing people in these 2 days. So some of them are from Pakistan, some of them are from outside Pakistan. So we are joined by people from Cyprus, South Africa, Bangladesh, India, and many other countries. So a huge welcome to all of you. A big thanks to all of you. We are really thankful to all of you. And now this is high time to talk about the high-speed internet. This is the right time because we are also joined by Mr. S.N. Kamre, senior media person and who is also into academia.
And we are also joined by Mr. Farhan Riaz, a senior manager and I guess a founder of Tech. So Sir Farhan can correct me if I'm wrong. So he started Tech at University of Engineering and Technology, Lahore, few years ago, and now Tech is achieving new heights under his visionary leadership. So his passion for guiding startups is just amazing. So Mr. Hassan Kamre, Sir Farhan Riaz are going to be part of our panel too, along with some other amazing panelists. And COO Shahruh Technologies, Mr. Majid Kadri is going to moderate this panel. So I'll hand over floor to Mr. Majid Kadri to formally start the proceedings of panel 2. Floor is yours. Yes, Assalamu alaikum everyone. I am Majid Kadri, COO Shahruh Technologies, and I am honored to moderate an exciting panel discussion on the need for high-speed internet in emerging media tech at our online conference, Emerging Trend in Media Tech. As we know, in today's rapidly evolving digital landscape, reliable and fast internet is not just a convenience, it's a necessity. From content creation to global collaboration, high-speed connectivity powers the media tech industry and beyond. Joining me for this critical conversation are Farhan Rehaz, Program Manager at TIC, highlighting industry demands, Hassan Kamde, CEO of Opportunity Club, journalist at Express Media Group. We can also do. We will also be joining by some other panelists, Asim Hafiz, Assistant Professor exploring academic and research implications. Naveed Mukhlis, GIS Professional. Nozibele Sogoni, founder of Nozibele Solutions, bringing insights on global connectivity. First, my questions is for all the panelists. How would you define the importance of high-speed internet in today's media tech landscape? My question is for all the panelists. How would you define the importance of high-speed internet in today's media tech landscape? Everyone can Thank you answer. very much. Thank you very much, Majid Kadri. Am I audible? Am I audible? Yes, yes. Right. Thank you very much for arranging such a beautiful and thought-provoking seminar and on digital media. Right now, you have asked the importance of high-speed internet. So if we see this world now, we are in the digital world, and digital world is the future. It is the present, and it will be. So the high-speed internet and connectivity is very important because when we are moving towards digital media and we are shifting towards the modern trends, so the high-speed internet and connectivity and accessibility is important across the globe. So when we discuss in Pakistan, we are facing a lot of issues
regarding the speed of internet, the connectivity. So we have suffered a lot. So for the boosting the economy, for job creation, for education, and for creation of content. So I think it's important in every aspect of life. Next, I have a question for Farhan Rehaz. Industry perspective. What role do startups and tech companies play in creating innovative solutions to optimize media tech with limited internet infrastructure? Sir Farhan Riaz, can you answer my question? जी अस्सलाम वालेकुम ये आप मुझसे पूछ रहे हैं सॉरी इट्स एक Yes, अलमिया yes. इट्स really Sir, it's very ironical what that we role are do talking about high startups speed and internet and at a very yes please carry on. what role do startups and tech companies play in creating innovative solutions to optimize media tech with limited internet infrastructure? Yes, thank you. Thank you so much, Majid. Thank you so much, Hamid, for inviting me over. It's a real pleasure to be here, and it's really good to see Shahruh Technologies growing. It was even better pleasure listening to Sylvester and the overall ecosystem you guys are building. So, इसमें मुझे बहुत खुशी होती है. Am I supposed to speak English because we have international Yeah, so guests as well, or can I go bilingual? speak in English or Urdu, it's a bilingual conference. All right, ठीक हो गया. ये तो बड़ी खुशी की बात. Thank you very much, Hamid and Majid. और ये एक अलमिया है. It's very ironical कि हम high speed internet पे बात कर रहे हैं with such bad internet on my side and even other side. तो ये बड़ी एक दुख और अफसोस की बात है. बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ को हम डिस्कस कर सकते हैं, कुछ को नहीं कर सकते, लेकिन दिस हैम्पर्स द ग्रोथ. और इसमें स्टार्टअप की अगर आपने बात की है या पूरी दुनिया के अगर हम इनोवेशन इकोसिस्टम को देखें, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट उसे हम कहते हैं कि मूर्स लॉ. अब वो शायद कुछ ने किताबों में भी पढ़ा हो तो बड़ा वो ट्रांजिस्टर से रिलेटेड है, लेकिन व्हाट इट स्टेट्स इज हर 1 या 2 साल में आपके ट्रांजिस्टर्स जो है ना वो एक चिप एक गिवन एरिया पे डबल हो जाते हैं. नाउ व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स इज कि आपकी हर 1-2 साल बाद टेक्नोलॉजी एक क्वांटम लीप लेती है. फॉर एग्जाम्पल, हम अगर मीडिया टेक की बात करें, थोड़ा सा मैं उन एग्जाम्पल से बात करूंगा जिससे यूट्यूब था, क्योंकि आप लोग यंग बच्चे हो तो आई रिमेम्बर द टाइम जब हम डायल अप इंटरनेट के ऊपर मॉडेम के अंदर वो अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती थी और उसके बाद हम इंटरनेट कनेक्ट करते थे, तो तब इट टुक एन इटर्निटी टू लोड अ वीडियो. यानी एक हर साथ दराज लग जाता था आपको हार्डली 5 मिनट की वीडियो प्ले करने के लिए. बट इवेंचुअली एज इंटरनेट स्पीड ग्रू और वो तेज होता गया बिकॉज ऑफ द जिस तरह मूर्स लॉ का जिक्र किया टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, देन यूट्यूब बिकेम पॉसिबल. फिर जाकर जब स्ट्रीमिंग मजीद तेज हो गई, और अगर आप वो जरूर देखिएगा सिलिकॉन वैली का सीजन है एक, उसमें पाइपर के ऊपर वो बात करते हैं, तो डेटा पैकेट्स आप किस तरह इंजीनियर करते हो, दिस इज वन पार्ट. द अदर पार्ट है कि आप किस तरीके से टेक्नोलॉजीज को लेवरेज करते हो. तो तब उस इतनी चीज के बाद तब जाके नेटफ्लिक्स पॉसिबल हुआ. अदरवाइज एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द हाई स्पीड इंटरनेट, एंड इट ऑल्सो बिकॉज आप बिजनेस मॉडल्स किस तरह से हाई स्पीड इंटरनेट के साथ लेवरेज करते हो. तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है. वी आर ऑल ऑन सेम पेज कि भाई इंटरनेट तो इट्स अ मस्ट, हाई स्पीड इंटरनेट. लेकिन अब उससे जो हमें रीसेंट मसाइल हो रहे हैं, हमारी अगर हम बात करें फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम, तो फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम में पिछले कुछ महीनों पहले भी फाइवर के हमारे पाकिस्तानी प्रोफाइल्स को वेकेशन मोड या सस्पेंड मुख्तलिफ इसमें वर्जन हैं वो कर दिया गया, तो बहुत बेतहाशा नुकसान हुआ. आई कैन नॉट पुट अ प्राइस टैग टू इट, बट इट वाज मे बी safe to say millions of dollars at the whole national scale. Similarly, अगर आप देखें अभी आजकल मैं देख रहा था, एक तो हमारा फ्रीलांसिंग इकोसिस्टम है, दूसरा हमारी ई कॉमर्स भी है जो पाकिस्तान में इट्स फ्लरिशिंग. तो अभी आजकल मुख्तलिफ साइट्स के ऊपर आ रहा है जी के बिकॉज ऑफ द रोड ब्लॉकेजेस, बिकॉज ऑफ द इंटरनेट स्पीड्स ऑर्डर आपके डिले हो सकते हैं. तो यहाँ भी मसाइल आ रहे हैं. इवन इस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमें दिक्कत हुई है, और आई एम नॉट श्योर मेरी आवाज़ आपको पैची आ रही है या भी
बीच में रुक रुक के लैग के साथ आ रही है, क्योंकि माजिद भाई को सुनने में मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही थी। बट यही एक जो चीज़ है, तो स्टार्टअप्स के लिए हाई स्पीड इंटरनेट इज अ मस्ट। अब हम आते हैं, बात चले नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और दीगर और चीजें तो हो गई, अब आगे क्या मुमकिनात हो सकती हैं? तो आगे जो पॉसिबिलिटीज हैं, आई आई थिंक सो देयर इज अ लॉट ऑफ रूम इन द ई स्पोर्ट्स इनोवेशन। लाइव स्ट्रीमिंग की बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, यूट्यूब वगैरह बाकी चीजें देते हैं। AR VR बेस्ड बहुत सारी लाइव स्ट्रीमिंग या स्टार्टअप्स जो हैं, अगर आप इंटरनेट के जो जो मॉडल्स हैं, तो ये अगली जो जनरेशन होगी, तो आई बिलीव इट्स हाई एंड मीडिया टेक, और आई बिलीव इट इज जो कि बहुत नए किस्म के और दिलचस्प किस्म के मॉडल्स को जन्म देगा। और उसमें सबसे मसलन कुछ अर्सा पहले का ये पुराना मॉडल है, बट आई वुड जस्ट पिच इट हियर, उसको कहते हैं सिटीजन जर्नलिज्म। सिटीजन जर्नलिज्म से मुराद ये है कि जी, जो कि अब कुछ हद तक होना शुरू हो गई है यूट्यूब के ऊपर, हम कोई चीज़ देखते हैं, हमें अच्छी लगती है, बुरी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन हम उसकी तस्वीर, उसकी वीडियो बना लें, तस्वीर खींच के हम किसी प्लेटफॉर्म पे लोड कर दें। बट यूट्यूब इज एवरीथिंग। इट्स जस्ट लाइक सेइंग कि जी फेसबुक है तो लिंक्डइन की जरूरत नहीं थी, बट लिंक्डइन इज फॉर प्रोफेशनल्स। सिमिलरली हम कहते हैं भाई फेसबुक लिंक्डइन आ गया तो भाई और कुछ नहीं आ सकता। देन वी हैव स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, इन बेशुमार जिसपे आप नैरो डाउन कर लेते हैं, टिकटॉक है। सिमिलरली ये जर्नलिज्म के ऊपर, जैसे सिटीजन जर्नलिज्म की बात कर रहा हूँ, अगर एक प्लेटफॉर्म हो जिसपे सिर्फ खबरें, अखबार या आपके सोसाइटी के प्रॉब्लम या गुड स्टार्टअप, तो उसको नैरो डाउन कर दिया जाए, तो आई बिलीव इस तरह का एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है। बानी का कहानी मुझे बड़ा खूबसूरत नाम लगा है, ड्राइंग्स, और बड़ा हमारी जबान में है तो बड़ा खूबसूरत नाम है ये। दिस कैन बी वन ऑफ देम। मीडिया टेक की अभी बात कर रहे थे, हाँ, हमें तो वो भी बहुत ज़बरदस्त पॉसिबिलिटीज हैं, बट इन तमाम चीज़ों को हाई स्पीड इंटरनेट दरकार है। उम्मीद है कि अल्लाह खैर करे, आज के कुछ दिनों के बाद बेहतरी की तरफ हम आ जाएंगे, बट स्टिल विद सच टैलेंटेड यूथ इन आवर कंट्री, और हमारा एक जो है ना, फ्रीलांसिंग में वी आर डूइंग वेरी वेल, स्टार्टअप्स में भी वी आर ग्रोइंग। अभी इकोसिस्टम कदरे नया है, नौमौलूद है, नेसेंट है, लेकिन ये कि uh, हम अगर फ्रीलांसिंग और इन चीज़ों को मजीद फरोग देना चाहते हैं, तो इट्स नॉन नेगोशिएबल, इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन कि अगर हम फजूल इंटरनेट के साथ, एक स्लो इंटरनेट के साथ, हम किस तरीके से इस चीज़ को पूरा करेंगे। हम बात करते हैं आईटी एक्सपोर्ट्स की, हाउ वी गोना एक्सपोर्ट IT, how are we going to ship solutions, or how are we going to have collaborative meetings, जब ये चीज़ मुमकिन नहीं होगी। Anyway, there are so many other things we can talk about, so I would love to hear the insight from other panelists as well. थैंक यू फरहान रियाज साहब, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू की और उसमें काफ़ी चीज़ें आपने मेंशन की कि गवर्नमेंट की तरफ से इंशाल्लाह बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो हाई स्पीड होगी तो ही हम इसको आईटी को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। पैनल में हमारे साथ शामिल हुए हैं आसिम हफीज़ साहब, उनको भी हम वेलकम कहते हैं। आसिम हफीज़ साहब के लिए मेरे पास एक सवाल अस्सलाम है वालेकुम। कि वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस सर, यू आर ऑडिबल। अच्छा आसिम साहब, मेरा एक सवाल है आपसे कि हमारा जैसे टॉपिक है कि हाई स्पीड इंटरनेट, तो एकेडमिया और रिसर्च को लेते हुए हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह हाई स्पीड इसको इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि हम एकेडमी में या रिसर्च प्रोसेस में इंटरनेट को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि रिसर्च के लिए बहुत ज़रूरी है। तो कैसे लैक ऑफ इंटरनेट स्पीड जो है हमारे इस चीज़ को इफ़ेक्ट करती है, काइंडली ज़रा आप इजहार करें इस पे अपना। देखिए, जो इंटरनेट स्पीड है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में हम देखते हैं कि वहाँ पे जो बेसिक ह्यूमन राइट है ना, आपकी, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है जी, मतलब राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारा बेसिक राइट्स हैं। तो सेम उसी तरह दुनिया के बहुत से मुल्कों में जो इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड करना या इंटरनेट फैसिलिटेशन होना, ये एक ह्यूमन राइट के तौर पर रिकग्नाइज किया गया। और क्यों? इसकी वजह ये है कि देखिए, जो एक मीडिया, सोशल मीडिया कह लें या
ऑनलाइन आपकी लिविंग है, वो अब आपका एक पार्ट ऑफ लाइफ है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपके जिंदगी के दूसरे मामलात हैं, मतलब खाना पीना और बहुत जो नेसेसिटीज भी हम कह सकते हैं, सेम इसी तरह आपका ऑनलाइन जो लाइफ है या ऑनलाइन आपका मौजूद होना, ये भी आपका एक लाइफ पार्टनर है। अमूमन ये मतलब एक ह्यूमन साइकी भी कह लें, या हम अगर अपने इर्द गिर्द भी देखें दोस्तों को, तो हम खुद परेशान हो जाते हैं अगर हम देखते हैं कि किसी को कुछ देर के लिए हम ऑनलाइन नहीं देख पा रहे, उसकी एक्टिविटी रुक गई है, तो लोग, बहुत से लोग परेशान होते हैं इस वजह से कि जी लोग जी वो ऑनलाइन नहीं है। इवन जो ऑनलाइन हैबिट्स हैं वो आपकी साइकी को रिप्रेजेंट करती हैं। और ऑनलाइन रहना, अगर हम इसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो ये अब आपकी स्टडी में है, ये आपके बिजनेस में है, आपकी लाइफ रूटीन में है, इवन आपकी हेल्थ इसके साथ जुड़ी है। जो एप्स हैं और बहुत से लोग जो ये एहतमाम करते हैं कि वो अपने जो हेल्थ डाटा को अपडेट रखें, अपनी हैबिट्स को। तो अगर हम इन सारी चीज़ों को गौर करें, तो जो ऑनलाइन रहना है या इंटरनेट स्पीड, जाहिर बात है ऑनलाइन एक डायरेक्टली लिंक है इंटरनेट स्पीड के साथ। अगर आप सिग्नल प्रॉब्लम है, अगर आपका किसी वजह से भी आप ऑनलाइन नहीं रह पाते, तो आपकी वो जितनी एक्टिविटीज़ हैं जो आपके साथ मुंसलिक हैं, जो आपकी फाइनेंशियल, प्रोफेशनल और बहुत सी एक्टिविटी, जैसे हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे यहाँ इंटरनेट की स्पीड की वजह से फाइबर और कई कई जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने बाकायदा ऑर्डर्स के हवाले से एक एडवाइजरी जारी की। और बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो है ना, जहाँ पे आपके लोग हैं जिनकी अब लिविंग इस पे है, जो कमा भी रहे हैं, इसी से अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, तो उनकी जिंदगियां इसके साथ मुंसलिक बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर वो एक दिन के लिए भी स्पीड कम है या स्पीड नहीं है, इंटरनेट ब्लॉक है, तो समझिए उस दिन उनके टास्क कंप्लीट नहीं है। और अगर हम इसको देखें कि हम जो इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ चल रहे हैं, अब कंपटीशन में चल रहे हैं, तो आपकी जो ये जो प्रोफेशनल इदारे हैं, जिनका पूरी वर्किंग रिलेटेड है, मसलन बहुत से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मतलब रिसर्च करना चाहता है, कोई वेबसाइट्स देखना चाहता है, किसी ने किसी के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स की हुई है, इसी तरह लोगों की जो है ना मुख्तलिफ तरह की क्लासेस होती हैं, बहुत से और मामलात होते हैं। तो अगर इंटरनेट स्पीड डिस्टर्ब होती है या किसी वजह से ब्लॉक होती है, तो लोगों की टोटल रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है। फिर आगे हम जाके देखें कि लोग ट्रैफिक एडवाइजरी लेते हैं, लोग इवन मौसम के हवाले से, अपनी चीज़ों को प्लान करने के हवाले से इंटरनेट पे जो है डिपेंडेंट है। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उससे आगे जाके कनेक्टिविटी, जो सोशल इश्यूज हैं, बस सोशल मीडिया है कि मतलब बहुत से लोग अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ करते हैं, बहुत से लोग इंटरनेट को या ऑनलाइन रहकर अपनी मतलब बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। कोई लाइव आता है, कोई अपनी वेबसाइट जो है ना सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे चीज़ें प्लान करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपकी इंटरनेट स्पीड मुतासर होती है, आपकी ऑनलाइन लाइफ या ऑनलाइन आपकी मौजूदगी मुतासर होती है, तो वो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो आज के दौर में ये जिस तरह एक बेसिक ह्यूमन नीड्स आपकी डिफरेंट हैं, आपका साफ पानी होना चाहिए, आपके हम आजकल जैसे कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, आप पोल्यूटेड नहीं हो, आपकी जो इन्वायरमेंट है, जिस तरह हम कहते हैं कि एजुकेशन एक राइट है, सेम आज के दौर में इस पे बात होनी चाहिए और हो रही है कि एक राइट टू एक्सेस जो है इंटरनेट, और अनडिस्टर्ब डिस्टर्ब जो इंटरनेट है, ये आपका राइट है। और अगर ये मुतासर होता है, तो आपकी टोटल लाइफ डिस्टर्ब होती है बहुत सी जगह। थैंक यू असम साहब, बहुत अच्छी चीज़ें आपने शेयर की इंटरनेट के हवाले से, कि बेसिक ज़रूरत है जी हमारी। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इसके बारे में गवर्नमेंट कोई ना कोई अच्छे स्टेप्स ले। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ मीडिया पर्सन एसन कैमरे से। सर हमारा टॉपिक जैसे है कि नीड, जो हमारी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर एक खबर जो है वो टाइम पे नहीं पहुंची,
तो उसकी एक्यूरेसी या उसकी अफादियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसके बारे में आप ज़रा अपने ख्यालात का इजहार करें। जी, थैंक यू वेरी मच माजिद। देखिए, जो आपका ये क्वेश्चन है न्यूज़ की टाइमलीनेस का, अब ये डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा है। अगर प्रिंट मीडिया है तो उसमें तो ऑब्वियसली एक दिन के बाद ही पब्लिश होगी। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है तो उसमें सेकंड्स की गेम होती है और फौरी तौर पे उसको होना होता है। अगर डिजिटल मीडिया है तो उससे भी ज़्यादा फास्ट है। और मोस्टली ये होता है कि डिजिटल मीडिया की न्यूज़ जो है वो ट्रेडिशनल मीडिया भी ऑन एयर करता है। तो टाइम तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूज़ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टाइमलीनेस ही होती है, कि टाइम पे न्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही। और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जब टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद वो रेलिवेंट नहीं रहती। और खास तौर पे ऐसी चीजें जो रैपिडली चेंज हो रही होती है, जब सिचुएशन जो है वो तेजी से बदल रही होती है, तो उसके अंदर तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी चूंकि हमारा टॉपिक भी डिजिटल मीडिया और हाई स्पीड इंटरनेट के रेफरेंस से है, जो टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो उसमें तो और ज्यादा चीजें आ गई हैं। मतलब हम अभी हमारे दोनों पैनलिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी डिस्कशन की है सिटीजन जर्नलिज्म के बारे में भी, और आसिम साहब ने भी बहुत डिटेल से चीजों पे डिस्कस किया, फरहान साहब ने भी। तो अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जो इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, जो डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। वो ये है कि जैसे जैसे मीडिया के अंदर चेंजेस आई हैं, तो इन द रिसेंट टाइम्स हम देखते हैं कि मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट जो है ये बहुत रैपिडली इस पे लोग काम कर रहे हैं, और हो रहा है पाकिस्तान के अंदर भी अब हो रहा है। अब बाकायदा जब डिग्री लेते हैं आप मैथ कम्युनिकेशन की, तो उसमें मीडिया एंटरप्रेन्योरशिप पे कोर्स के तौर पे पढ़ाया जा रहा है। और स्टूडेंट्स जो है वो नए नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। लेकिन हम ये देखते हैं चूंकि डिजिटल पे हम जा रहे हैं, तो ज्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं वो डिजिटल से ही रिलेवेंट हैं, जहां पे इंटरनेट की जरूरत होती है। तो उनके लिए ऑब्वियसली हमें हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो जरूरी है। और वहां भी जो भी आपने देना है, जो इन्फॉर्मेशन आपने देनी है, और डिजिटल पे भी आपको पता है कि जो लोग कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उन्हें इस चीज की इंपॉर्टेंस का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि वहां भी टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और डिजिटल मीडिया पे भी जिस तरह ट्रेडिशनल मीडिया के अंदर एक रेस होती है सबसे पहले और सबसे क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो है वो देना, तो इसी तरह डिजिटल मीडिया पे भी एक रेस होती है। कोई इन्फॉर्मेशन है उसको सबसे पहले अपने चैनल पे, अगर यूट्यूब चैनल है तो वहां पे अपलोड करें, अगर वेबसाइट है तो वहां उसको शेयर करें। तो न्यूज में टाइम जो है बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन मेरा आखिर में एक क्वेश्चन ये है आप सबसे कि हम सब इस चीज़ को फेस कर रहे हैं कि इंटरनेट स्पीड ठीक नहीं है, बंद हो जाता है, आए दिन कोई ना कोई मसले मसाइल हैं। तो मेरा आप सबसे ये क्वेश्चन है कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं हमारी नज़र में, या एज अ प्राइवेट सेक्टर, एज अ गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि इसमें बेहतरी आए। देखें, इसमें एक तो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे यहाँ इंटरनेट स्लो डाउन होने की एक बहुत बड़ी रीजन जो है ना, वो पॉलिटिकल पोलराइजेशन और पॉलिटिकल रिफ्ट है। आज भी इंटरनेट स्लो है, कल भी इंटरनेट स्लो था, परसों भी स्लो था। ये 3-4 दिन से इंटरनेट जो है बहुत ज्यादा स्लो है। और इससे पहले हमने ये भी बहुत सुना और इन्वेस्ट किया गया फायरवॉल के ऊपर भी। तो जहां पे भी आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जहां पे पॉलिटिकल पोलराइजेशन होगी, जहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, तो वहां पे इस तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। जहां पे चीजें स्मूथ होती हैं, कि हम बहुत सारी चीजों के ऊपर जो नेशंस हैं वो कंसेंसस कर लेती हैं कि हम जो भी होगा, बहुत ऐसी चीजें हैं जो नेशनल इंटरेस्ट के बारे में हैं, जिनसे कौम का मफाद जुड़ा है, जिनसे इकोनॉमी जुड़ी है, जिससे स्टेबिलिटी जुड़ी है, उन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो ये जो चीजें हैं ना, ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर और जो पावर सेक्टर्स हैं वहां पे डिस्कस होने वाली हैं, कि अगर इंटरनेट जो है, बल्कि यकीनन इंटरनेट जो है इस दौर के अंदर भी और फ्यूचर में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जिससे हमारी इकोनॉमी पे लिंक्ड है, जिससे हमारी डेमोक्रेसी लिंक्ड है, जिससे हमारे इंफॉर्मेशन लिंक्ड है, जिससे हमारे सारे सेक्टर्स लिंक्ड हैं। तो उस इंटरनेट के बारे में और उस इंटरनेट को हाई स्पीड करने में, उस इंटरनेट को इफेक्टिव बनाने में और उसको अपग्रेड करने के लिए जो पॉलिसीज हैं उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जी थैंक यू एहसन कैमरे साहब। मैं मैं चाहूंगा चाहूँगा कि कि रियाज रियाज साहब भी भी अपना कुछ इजहार इजहार करें, करें, क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट लेवल और प्राइवेट सेक्टर दोनों को आप बेहतर जानते हैं कि स्टार्टअप कम्युनिटी और यूईटी में रहते हुए गवर्नमेंट सेक्टर को भी आप बेहतर जानते हैं। तो काइंडली आप भी कुछ इजहार करें। हाँ, आई वुड सेकंड, बहुत शुक्रिया माजिद। आई वुड सेकंड जो एहसन कह रहे हैं कि देयर इज अ लॉट ऑफ पोलैरिटी, और जो पोलराइजेशन है, और अब ये भी एक क्या कहना चाहिए, इट्स लाइक अ चिकन
एंड एक प्रॉब्लम कि आज़ादी सहाफ़त भी एक हमारा मेजर एक चीज़ है। एहसन और बाकी लोग इस पे एग्री करेंगे, और हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद सर्टेन लिमिट्स, वो भी जरूरी है, वरना आप आज़ाद सोच को, आज़ाद चीज़ को किस तरह परवान चढ़ाएंगे। तो पहली तो एक ये बात, बट इसी का फिर एक बाय प्रोडक्ट आता है पोलराइजेशन। तो शायद इट हैपेंस एवरीवेयर, लेकिन हम खाली जो है इन द डिफेंस, हम अपने, मैं बोलूँगा ऑल्दो हम इस पे बहुत नाला है एंड वी आर रियली डिसअपॉइंटेड ऑल ऑफ अस, लेकिन ये कि बहुत सारे और ममालिक में भी सेंसरशिप तो होती है, लेकिन जो सेंसरशिप जो है अभी उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है कि आपके इंटरनेट स्पीड, मसलन कतर में, गल्फ कंट्रीज में जो है बहुत सारी चीज़ें सेंसर्ड लेवल के ऊपर आ रही होती हैं, लेकिन वहाँ इंटरनेट स्पीड शायद कॉम्प्रोमाइज इस तरह से नहीं होती है। बट हम जो है एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप के ग्रुप या गवर्नमेंट में भी हम लॉबी कर लेंगे, थोड़ी आवाज़ पहुंचा देंगे, बट दे ऑलरेडी नो दैट। तो अगर हैड इट बीन सम काइंड ऑफ अ टेक्निकल प्रॉब्लम, सॉफ्टवेयर इशू, तो वो हम लोग खुद फिक्स कर सकते हैं इन आवर ओन पर्सनल कैपेसिटी। बट आई एम नॉट अ पेसिमिस्ट, लेकिन ये इस किस्म के मसाइल मुझे लगता है कि हम लोग खाली इस चीज़ को एक रिस्पेक्टफुली उन तक कन्वे करने के अलावा कुछ खास नहीं कर सकते। आप बहुत एक और सवाल एक अंडर डिस्कशन आता है जी कि भाई पॉलिसी मेकर्स को, स्टेक होल्डर्स को ये बावर कराया जाए, उनको बताया जाए, रियलाइज करवाया जाए, बट दे ऑलरेडी नो दैट। तो वो इस चीज़ से बखूबी जो है ना आगाह है, लेकिन प्रायोरिटीज का एक डिफरेंस है। आपकी हमारी प्रायोरिटी मुख्तलिफ है एट अ बिगर लेवल, एट द कंट्री स्टेट लेवल उनकी प्रायोरिटी इस वक्त मुख्तलिफ है। कौन सही कौन गलत तो एक डिफरेंट डिबेट है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद देयर इज नॉट मच वी कैन डू अबाउट इट। और हाँ, पोलराइजेशन को अगर हम कुछ हद तक एक रिस्पेक्टफुल तरीके से, जो कि हमारे यहाँ कमी है अखलाकियात की हर एंगल से, यानी कोई भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, चाहे स्टूडेंट्स हो, हमें अपना नजरिया जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, एक बड़े खूबसूरती से किसी के जज्बात को हर्ट किए बगैर अगर हम पहुंचाना जान जाएं, तो मेरे ख्याल से काफी और खराबियां भी कम हो सकती हैं। तो इट्स मोर ऑन द एथिकल साइड रादर देन द पॉलिसी साइड। ये मेरा एक जस्ट माय टू सेंट। थैंक यू फरहान सर। हमारे ऑफिस में इस टाइम एक काफी एक्सपीरियंस्ड और सीनियर पर्सन मौजूद हैं, रसूल साहब। वो कुछ इजहार करना चाहेंगे। अभी वो रिसेंटली यूएई से होके आए हैं, तो वो इस इंटरनेट स्पीड के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे। जी, थैंक यू वेरी मच। जिन चीज़ों को अभी यहाँ पर हाईलाइट किया गया है, मेरे उस एक्सपीरियंस के मुताबिक, चूंकि मेरा ताल्लुक जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के साथ रहा है, और मैं उस दौर से रेडियो पाकिस्तान में हूँ जबकि एक जो एहसास था वो था आज़ादी सहाफ़त का। और दुनिया में हर जगह आज़ादी सहाफ़त के मुख्तलिफ तरीके हैं। अगर आप यूएई के अमारात के हवाले से बात करें तो जाहिर है कि वहाँ मोनार्की है। सऊदी अरब में आप बात नहीं कर सकते। और आज के दौर में इंफॉर्मेशन को रोकने के लिए खुद पाकिस्तान में जितने भी टैबूज यूज किए गए हैं, जितनी भी चीजें की गई हैं, खबर रुकती नहीं। ये हवा के पन्नों पे सवार होके कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। और जिस वक्त आर्टिफिशियल तरीके से खबर को रोका जाता है तो फिर उसके साथ जो चीज पैदा होती है वो बहुत ही खौफनाक है, और उसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकते कि आप कितना नुकसान पहुंचे हैं। और वो है अफवाह। बात बनते बनते इतनी बिगड़ जाती है कि आखिर में सच नहीं रहता, और झूठ जो है वो छा जाता है और उस पर यकीन करना पड़ता है। पाकिस्तान के अगर मौजूदा हालात को देख ले तो इस कदर खौफनाक हैं मेरे तजर्बे के मुताबिक। हमारे मीडिया सेक्टर में जो भी पॉलिसी मेकर्स आए हैं, दे वर द नॉन प्रोफेशनल। उन्हें मीडिया स्ट्रेटजीज का नहीं पता था, उन्हें उसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था। बस उन्होंने जो कुछ सोचा और हुक्मरानों ने, उनके आकाओं ने
जैसे कहा वैसे उन्होंने पॉलिसी दे दी। अगर बैक टू यूएई, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में वहाँ वो आज़ादी बिल्कुल भी नहीं है जिसकी बात हम कर सकते हैं। लेकिन वहाँ लोग इसलिए नहीं बात करते कि वहाँ इतनी फैसिलिटीज हैं कि उन्हें उस तरफ सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और वो जो वे ऑफ लाइफ है वो इतना पुरसकून है, वहाँ इतनी फैसिलिटीज हैं कि लोग किसी चीज़ को डिस्टर्ब नहीं करते। वो कहते हैं कि ठीक है, जो चल रहा है सो चल रहा है। सब लोग अंदर से बात कहते हैं, लेकिन चूंकि वहाँ पर लोकल बंदे कम हैं, बाहर के लोग ज़्यादा हैं, और उन्हें चूंकि ये डर होता है कि हम अगर कुछ कहेंगे तो हमें उठा के बाहर भेज देंगे। यही हाल सऊदी अरब में होता है। इवन मक्का मुकर्रमा में, मदीना मुनव्वरा में, मस्जिद नबवी में बैठ के गॉसिप्स में बात करते हुए भी डर लगता है कि कोई इसको किसी तरीके से गलत इंटरप्रेट ना कर ले और हमें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए एहतियात तो वहाँ तो है ही है, मगर मेरे इस मुल्क में जहाँ पर हम ये क्लेम करते हैं कि यहाँ आज़ादी राय है, तो वो नज़र नहीं आती। अगर इस वक्त जो 3-4 रोज पहले के हालात और वाक़यात है, कोई वक्त आ चुका है जब आप एजुकेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की तरफ। हर स्कूल में आप लैपटॉप और मोबाइल फोन, उनकी एजुकेशन बच्चों की तबाह हुई। हमने उनको ये गैजेट दे के किताब से दूर कर दिया, लिखने पढ़ने के तसव्वुर से दूर कर दिया, उनकी इमला खत्म हो गई, लफ्ज़ों की शिनाख्त खत्म हो गई। अब वो सिर्फ जो है वो इसके ऊपर है, और अगर इसके ऊपर भी हैं तो जो इनके लिए एक मशीन है सांस लेने की, तो आर्टिफिशियल ब्रीथिंग के तौर पे अगर आपने इनको एक गैजेट इस्तेमाल करने का मौका दिया है और वो कर रहे हैं, तो फिर वो सिलसिला, वो फैसिलिटीज भी दें। आप बार बार इंटरनेट बंद करते हैं, इंटरप्शन होती है और बात कहीं से कहीं निकल जाती है। और इसीलिए कहा कि अफवाह साजी के कारखाने को, इस जहर को रोकना है, तो आप इतनी इजाज़त ज़रूर दें कि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो। जब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगी तो वो सच होगा, और सच जो होगा वो वहाँ पर छा जाएगा, बनस्बत इसके कि उस जहर के जो हम रोज़ अपने कानों के ज़रिए से, अपनी समातों के ज़रिए से अपने अंदर लेके आते हैं, और फिर दिल कहता है कि यही सच है। इसलिए अरबाब बस्त कुशाद की जिम्मेदारी है कि वो इसकी टेक्नोलॉजीज को भी देखें, और एक्सपर्ट्स को, जो मीडिया को, जो पैगाम रसानी को समझ सकते हूँ, उन्हें आगे लेके आए। ना कि किसी वकील को उठा के जो किसी और प्रोफेशन का है उसे आप मीडिया एडवाइजर बना देते हैं। उसका जो दिल करता है, उसके मन में जो चीज़ आती है, वो अपने दिल के हिसाब से वो बात कह रहा होता है। उसके पीछे उसकी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है, उन्हें कुछ पता नहीं होता। उन्हें तो जो लिखा हुआ देता है सेक्रेटरी, और सेक्रेटरी को भी कहो, वो उस फील्ड के नहीं होते, वो किसी और फील्ड से। हाँ, उनको चूंकि उनकी ट्रेनिंग तमाम ट्रेड्स में होती है, लिहाजा वो कुछ ना कुछ समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इससे बेहतर और कोई बात नहीं कि आप फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन को इजाज़त दें, और उसके लिए जो इंटरनेट की बंदिश, लो और ये चीज़ें लगाना, किसी किस्म की रुकावट पैदा करना, वो ठीक नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर इफ्तिखार। एज अ पाकिस्तानी, ये मसले मसाइल हमारे साथ ज़रूर हैं, और हम कंपेयर करते हैं अपने आप को बाकी कंट्रीज़ के साथ। लेकिन कंपेयर करना भी चाहिए और नहीं भी करना चाहिए कि जो मसले मसाइल हैं एज अ पाकिस्तानी हमने ही ठीक करने हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह इन कमिंग डेज में ये मसला बेहतर हो जाएगा। तो एट द एंड मैं सबको थैंक यू करता हूँ। जी, अभी हमें इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर जाफर
समदानी साहब ने ज्वाइन किया है, जो कि एक सीनियर एडवोकेट हैं और इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को कुवैत से ज्वाइन किया है। सर ने हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो सर, अभी कॉन्फ्रेंस में एक बात चल रही है, इस पे हम आपकी राय भी लेना चाहेंगे कि मुख्तलिफ ममालिक में इंटरनेट की जो स्पीड और जो कवानीन है, उस हवाले से मुख्तलिफ सूरत हाल है। पाकिस्तान में इस वक्त इंटरनेट थोड़ा सा बंदिश का शिकार है। प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब अभी हमें यूएई के बारे में बता रहे थे। तो हम जानना चाहेंगे कि कुवैत में और गल्फ की बाकी कंट्रीज में इंटरनेट की क्या सूरत हाल है और इस हवाले से क्या कवानीन पाए जाते हैं। सर, आप प्लीज अपना जी जी please। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आवाज आ रही है? जी सर, हम आपको सुन सकते हेलो। हैं। अच्छा, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आपके जो अल्फाज पहुंचे हैं तो मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे आप राइटिंग स्टेज पे हैं और वाइंड अप कर रहे हैं। तो मुनासिब नहीं है कि मैं आप ज्यादा टाइम लूं, सिर्फ दो तीन जुमलों में बात कहना मुनासिब समझता हूँ कि ये शहर आसिफ है, यहाँ आंखें नहीं काफी, उल्टा लटकोगे तो सीधा दिखाई देगा। हमारा तो बाबा आदम ही निराला है कि जो दुनिया जहान में अपनी नस्ल को, अपनी कौम को बचाने के लिए जो साइट्स, जो पेजेस बंद होने चाहिए वो हमने ओपन किए हुए हैं, वो एप्स हमने ओपन की हुई हैं, जिससे ना हमारा मिली तशख़्ख़ुस बन पा रहा है, ना हमारी कौमी शख्सियत परवान चढ़ रही है, ना हमारी नई नस्ल की तरतीब हो रही है, ना तालीमी निज़ाम को असिस्ट किया जा रहा है, ना हम फ्यूचर की कोई जनरेशन या नेशन पैदा कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता इस तरह की जो बंदिशें हैं वो इतना ज़रूर करती हैं कि फ्रीलांसिंग में जो बिलियंस डॉलर्स की पाकिस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है, हम उन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये पोलराइजेशन, पोलिटिकलाइजेशन जो हम कर रहे हैं उसके नाम पर। और अल्टीमेटली ये बुनियादी तौर पर, जैसे कहते हैं ना कि डी वेस्टर्नाइज करना, डी इस्लामाइज करना, कि यहाँ से मशरकियत को निकाल लिया जाए, यहाँ से इस्लाम को निकाल लिया जाए, यहाँ से आइडियलिज्म को निकाल लिया जाए, यहाँ पे हीरोइज्म को निकाल लिया जाए, और हर बड़ी शख्सियत, जैसे हीरोइज्म है तो हर बड़ी शख्सियत को डिस्प्यूटेड कर दें, जैसे अल्लामा इकबाल को, जैसे कायदे आज़म रहमा को। ऐसे ही तारीख की बेशुमार शख्सियात हैं, वो इतना डिस्प्यूटेड कर दें कि किसी पे एतमाद बन ही ना सके, ना फिर आज के किसी लीडर पे बने, ना फिर आने वाले पे बने। ऐसे ही नजरियात हैं, उनको इतना परागंदा कर दिया जाए, इतना परागंदा कर दिया जाए कि नई नौजवान नस्ल जो है उसके जहन में जो अकायद के बाब हैं वो भी सारे के सारे मुंतशिर ख्यालात में चले जाएं। और फिर मिली तशख़्ख़ुस के बाब में मिलिट्री को इतना पॉलिटिसाइज कर दिया जाए कि ना उनके पल्ले कुछ बचे, ना कौम के पल्ले कुछ बचे। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका ना अब कोई मैनिफेस्टो बचा है, ना कोई नजरिया बचा है, ना कोई सोच बची है। एक सरेआम मफादात का जो सिलसिला है वो दंदना रहा है। जैसे जंगल में शेर, हाथी और गैंडा दंदनाते हैं, ऐसे ही हम इंसानों के माशरे में ऐसे वहशी और हैवान के किस्म के जो लोग हैं वो दंदना रहे हैं। और मिली तशख़्ख़ुस का किसी जगह कोई पास नहीं है। ये जो जदीद दुनिया एआई की और नेट की शुरू है, यहाँ पे इस वक्त 5G का कॉन्सेप्ट चल रहा है, वहां पर उसकी कदगंज लगाई गई हैं ताकि कौमी और मिली तशख़्ख़ुस खराब ना हो, ऐसी ऐप्स को ऑन न किया जा सके कौमी सतह पर। जबकि हमारे यहाँ कौमी तशख़्ख़ुस के लिए और इस वक्त जो एआई की इंटरनेशनल ट्रेड है, मशीन लर्निंग है, उनको ऑन करने की बजाय, उनको परवान चढ़ाने की बजाय हम कोशिश कर रहे हैं कि नौजवानों को तालीम के बाब में, जो यंग ब्लड बिजनेस के बाब में आगे आ रहा है, उनकी साइट्स को या उनके नेट को इतना स्लो कर दिया जाए इंडिविजुअल ग्रोथ ना कर पाए और अल्टीमेटली वो कौमी इकोनॉमी में किसी किस्म की ग्रोथ ना कर पाए। तो वो का और बनाना स्टेट का अमली वजूद बना के रख दें कि फिर यहाँ पर कोई बंदा रहने को तैयार ना हो और कोई आगे चलने के लिए तैयार।
जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समराइज़ किया और आपने हमें कुवैत से ज्वाइन किया स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस में। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं और एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव जानने का मौका मिलता है। हमारे और भी कुछ गेस्ट आए मुख्तलिफ ममालिक से, उनसे भी आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं एहसन कामरे साहब से पूछना चाहूँगा, एहसन आपका बहुत काम है ये मीडिया डिप्लोमेसी को लेके, तो इस हवाले से आई गेस ये इस पैनल का आखिरी सवाल ही होगा। और अगर एहसन के अलावा फरहान रियाज साहब या आसिम हफीज साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो सवाल आखिरी है, जवाब आप लोग मिलजुल के दे सकते हैं कि इस चीज़ को कि अब जब मुख्तलिफ ममालिक में अलग तरह के इश्यूज आ रहे हैं तो पाकिस्तान इस चीज़ को एज अ मीडिया डिप्लोमेसी टूल कैसे यूज़ कर सकता है। वैसे इस पे हमने एक पूरा पैनल रखा है डे 2 पे पैनल 4, लेकिन मैं आप लोगों की राय भी जानना चाहूँगा। तो प्लीज़ एहसन साहब आप अगर इसका आंसर करना चाहें। जी, थैंक यू वेरी मच भाई। देखिए, एक तो यह है कि जो डिप्लोमेसी के टूल्स हैं उसमें मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज तो है, और आप करते हैं। अब डिप्लोमेसी के लिए यह है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे लोग जो हैं डिफरेंट कैंपेन्स ऑनलाइन रन करते हैं, डिफरेंट यंगस्टर्स जो हैं डिफरेंट कंट्रीज में लोग मिल के तो ज्वाइंट वेंचर्स करते हैं ऑनलाइन, और कैंपेन्स रन की जाती हैं, इवेंट्स ऑनलाइन, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, कल्चर में भी उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डेमोक्रेसी के हवाले से भी डिस्कशंस होती हैं। तो एक तो ये है कि जॉइंट वेंचर्स हो सकते हैं डिजिटली, और उनके थ्रू जो है वो डिप्लोमेसी आप कर सकते हैं, उसके थ्रू आप कल्चर्स को प्रमोट कर सकते हैं। तो ये एक मीडियम है जिसको बड़े इफेक्टिवली यूज किया जा सकता है, और पाकिस्तान में मैं समझता हूँ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस कर भी रहे हैं, ऐसी कुछ फाउंडेशंस भी बनी हुई हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, डिजिटल लिटरेसी पे और डिप्लोमेसी पे भी, जो डिजिटली जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू कर रहे हैं। बहुत खूब। तो इसी हवाले से अगर फरहान रियाज साहब या आसिम हफीज साहब अपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना चाहें तो प्लीज़। मैं दो मिसालें शेयर करना चाहता हूँ। जी प्लीज़। इस मौजूदा जदीद दौर में जिस जगह तसव्वुर इकोनॉमी का और पीस का धुंधलाया हुआ है, इस 2024 जब दिसंबर शुरू होने वाला है, मैं दो मिसालें एआई की टेक्नोलॉजी पे सजेशन के तौर पर और दो मिसालें एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने रखना चाहता हूँ। मिली अर्जेंटाइन का हेड है, और अर्जेंटाइन में करप्शन अपनी अरूज पर थी। उसने इक्तदार संभाला तो उसकी आइडियोलॉजी को कोई बंदा पसंद नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने 2 माह दिन रात एक करके अपने मुल्क के अखराजात 50% कम कर दिए, और पिछले 3.5 साल में काम करके उसने अपना बजट सरप्लस में कर दिया। आज भी हो सकता है। अर्जेंटाइन के साथ ही लातीनी अमेरिका का एक दूसरा मुल्क है, 37 साल वजीर आजम है, माफिया का कंट्रोल है, कैपिटल तक पर अमन नहीं था। उसने 2 साल 2.25 साल की मुद्दत में पूरे मुल्क में माफिया का सफाया कर दिया है। पहले कैपिटल में कोई दिन दिहाड़े भी बिजनेसमैन सेफ नहीं था, और अब उसके दूर दराज देहात में खवातीन तक सेफ हैं। तो हर चीज मुमकिन है। कहते हैं कि फाइजा इरादा जस्ट डिटरमिनेंट डिसाइड हो जाती है। सजेशन क्या है एआई के दौर की? 2 जुमलों में। नंबर 1, इस वक्त दुनिया के कमोबेश 200 ममालिक जो हैं वो इन लिस्ट में मौजूद हैं ग्लोबल मैप के, और पाकिस्तानी वहां पर मौजूद हैं। उनको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, उनको अपने कागजात बनवाने के लिए मुख्तलिफ सफारती हलकों में जाना पड़ता है। अगर एआई की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके सिर्फ इस्लामाबाद में एक कैपिटल ऑफिस ऑन करके और एक ऐप लॉन्च कर दी जाए, तो दुनिया जहान में बैठे हुए तमाम डिप्लोमेटिक ऑफिस का हमारा खर्चा मोर देन 50% रिड्यूस हो जाएगा, कि वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स बन भी जाएंगे, इंडोर्स भी हो जाएंगे, स्टैंप भी हो जाएंगे उस ऐप पे इंटरनेशनल, और ये सारे अखराज बचेंगे। नंबर 2, इसी बात में एआई की मौजूदा टेक्नोलॉजी और मौजूदा जो इंटरनेट की स्पीड है उस पर हम बैनर को, ये एग्जीबिशन हम कराची में कर रहे हैं, $1 बिलियन लगा देते हैं, और पिछले कोई 70 साल से हमारे तकरीबन तमाम ऑफिस में कमर्शियल काउंसलेट बैठे हुए हैं, धंधा कर रहे हैं। 6,000 दिनार कमोबेश 50-40 लाख से लेकर 60 लाख के करीब यहाँ पर एम्बेसडर की रहायश है, और उतने का ही उसका घर है, और उसके पास कोई 20 बंदों का अमला है। उन सारों को उनकी जॉब प्रायोरिटी के मुताबिक रहायशगाहें दी हुई हैं, तनख्वाहें दी हुई हैं। अल्टीमेटली ये सारे का सारा बर्डन कौन पर
पड़ता, बदले बदले में इसके मिलता कुछ नहीं है। सिवाय ब्यूरोक्रेसी के पास जाए, वो कहते हैं साथ वाले कमरे में चले जाएं, साथ वाले कमरे वाला कहते नहीं साथ वाले में चले जाएं, वो कहते हैं जी वो साहब आ जाए नहीं, वो कहते नहीं उनकी डेट नहीं है, नहीं उनका स्कोप नहीं है, उनके पास अभी स्टैंप नहीं है, उनके पास अभी अथॉरिटी नहीं है, वो आज बीमार है, वो अगले हफ्ते चले जाएंगे, अगला बंदा आया नहीं, पिछला जा नहीं रहा। तो अल्टीमेटली इतना सरमाया कौम इन्वेस्टमेंट कर रही है, उसका चेक एंड बैलेंस का निजाम ही कोई नहीं है। और नंबर 2 पे कमर्शियल कॉन्सुलेट ऑफिस, इंटरनेशनल, आपने डिप्लोमेसी के बाब में बात की है। डिप्लोमेसी के बाब में दूसरा ये काम हो सकता है कि हम अपनी तमाम कमर्शियल एक्टिविटीज को ऐसे ही एआई के जरिए कनेक्ट कर सकते हैं, एक सेंट्रल सिस्टमाइज मैकेनिज्म चला सकते हैं। और तीसरा डिप्लोमेसी के बाब में अमेरिकन, टर्किश और ब्रिटिश, ये 3 मैंने मिसालें आपके सामने रखी हैं, इसमें और भी मिसालें हैं चाइनीज में, जिन लोगों ने अपना ऑफिस और अपना घर अलग अलग नहीं रखा हुआ, उसी बाउंड्री के अंदर उनका घर है, उसी बाउंड्री के अंदर उनका ऑफिस है, ताकि मुल्क पर एक्स्ट्रा अखराजात ना आए। हम बैन अवी सतह पर सिर्फ डिप्लोमेसी के बाद में सिर्फ एक हेड में अपने ऑफिस मेंटेन करने में सालाना बिलियंस डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं, और उसकी अल्टीमेटली ग्रोथ क्या है कि एक JF-17 थैंडर नहीं आप किसी को बेच सके इतना अखराजात करने के बावजूद, कोई लॉन्ग कोर्स में आप उनको ला नहीं सके अगर आप समझते हैं कि आपका लॉन्ग कोर्स बहुत अच्छा है। चौथी चीज चेक एंड बैलेंस का निजाम। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर, आपने माशाल्लाह अगेन एक दफ़ा बहुत कम्प्रीहेंसिवली सारी चीज़ को कंक्लूड किया है और बड़े वैल्यूएबल पॉइंट्स दिए हैं जिस पे अमल करके वाकई प्रैक्टिकली इन फुटस्टेप्स पे अमल करके इस चीज़ को अचीव किया जा सकता है। तो आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर डूइंग दिस अमेजिंग टॉक। इसी दौरान हमें हमारे एक बहुत अजीज़ उज़ैर शाहिद साहब ने सऊदी अरेबिया से ज्वाइन किया है। तो उज़ैर साहब, आई बिलीव कि आप हमारी सारी कन्वर्सेशन को सुन रहे थे और इस दौरान आपसे भी हमारा यही सवाल होगा कि इंटरनेट की पॉलिसीज़ और इंटरनेट की स्पीड के दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ तरीके से ये चीज़ असरअंदाज हो रही है। तो अभी मोहतरम प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब ने गल्फ़ के हवाले से हमें गाइड किया, डॉक्टर जाफ़र समदानी साहब ने हमें कुवैत के हवाले से गाइड किया, आसिम हफीज़ साहब ने पाकिस्तान के हवाले से बात की, फरहान रियाज साहब ने। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि सऊदीया में इंटरनेट की स्पीड के क्या हालात हैं और इंटरनेट के लॉज क्या कहते हैं इस बारे में। जैर साहब, आप हमें सुन सकते हैं? अगर उज़ैर साहब हमें नहीं सुन सकते इस वक्त, तो मैं चाहूँगा कि आसिम हफीज़ साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं, वो फिर इस पैनल के लिए अब जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं कि हम किस तरह से इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि आज की भी ये कॉन्फ्रेंस एक इंटरनेशनल ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ही थी। और आप सब लोगों का एक तो बहुत शुक्रिया कि आप इंटरनेट की इस बंदिश के बावजूद भी हमारे साथ सारा दिन जुड़े रहे। लेकिन इसको हम गोइंग फॉरवर्ड किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर जाफ़र साहब ने और एहसन काबरे साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि ये मीडिया डिप्लोमेसी का भी एक टूल है। इट्स नॉट अबाउट ओनली के जी फ्रीलांसर्स को इससे चंद डॉलर अर्न करने हैं, ये मुल्क की एक सॉफ्ट इमेज का भी सवाल है। तो इस हवाले से एकेडेमिया किस तरह से इस चीज़ को देख रहा है और हम किन हलकों से बात करके इस हवाले से बेहतरी ला सकते हैं। तो आसिम हफीज़ साहब, आपकी राय हम जानना चाहेंगे। जी उसमें बस कंक्लूडिंग ये था चंद जुमले के वैसे वैसे तो गवर्नमेंट ने कोशिश भी की है कि जो आईटी इंडस्ट्री को स्टेबल किया जाए, लेकिन ये एक ज़बरदस्त हमारे पास टूल है कि हम अपनी आईटी इंडस्ट्री को जो है ना मजबूत कर लें और इसके थ्रू हम अपने यंग यूथ को न सिर्फ दें रोजगार दें, बल्कि इसको प्रमोट भी करें और इसके थ्रू हम ज़र मुबादला भी कमाएं। ज़ाहिर बात, इससे हमारे मुल्क की मीशत में बहुत फ़र्क पड़ेगा और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि हमारा इंटरनेट स्पीड ठीक हो, और उसी वजह से इंशाल्लाह हम इसको ये टारगेट अचीव कर सकते बहुत शुक्रिया सर, और इसके साथ ही हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। मैं तहे दिल से मशकूर हूँ डॉक्टर जाफ़र समदानी साहब का, जिन्होंने हमें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ज्वाइन किया, मोहतरम आसिम हफीज़ साहब, इसके अलावा फरहान रियाज साहब जो कि इस वक्त अभी मीटिंग में मौजूद नहीं है लेकिन पूरे सेशन में हमारे साथ रहे, एहसन काबले साहब,
आप तमाम अब आपका बहुत शुक्रिया। उज़ैर शाहिद साहब साहब का बहुत शुक्रिया, वो हमारे साथ मीटिंग में मौजूद हैं, लेकिन आई गेस कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से अभी वो हमें सुन नहीं पा रहे। तो मैं फ्लोर हैंड ओवर करूँगा माजिद कादरी साहब को कि वो फॉर्मली एक दफ़ा तमाम पैनलिस्ट्स का शुक्रिया अदा करें और फिर हम इवेंट में नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ मूव करें। Thank you to all our esteemed panelists for their valuable insights on the critical role of high-speed internet in shaping emerging media technologies. Thank you once again for your time and contributions. Thank you. इसके साथ ही हम इवेंट को आगे बढ़ाएंगे। एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है शाहरुख टेक्नोलॉजीज के एक अपकमिंग मीडिया टेक प्लेटफॉर्म इनोवा टीवी के हवाले से, जो कि इंशाल्लाह शाहरुख टेक्नोलॉजीज बहुत जल्द लॉन्च करने जा रहा है। तो इस प्रेजेंटेशन को क्विकली लाइक तकरीबन आप कहने के 5 मिनट में हम आपके साथ गो थ्रू करेंगे, और हम चाहेंगे कि इस पे लेटर ऑन आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक भी हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि ये फीडबैक ही होता है जो इस तरह की किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से आगे ले जाने में मददगार साबित होता है। तो वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोग इस पे अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कीजिएगा। शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ का ये इनिशिएटिव ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी अच्छी इन जो आप कहने के फीडबैक गेट कर चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये एक और अच्छा फीडबैक गेट करेगा। So I'm gonna present Innova TV myself. So Innova TV is basically innovation TV, and it is here to innovate media tech. This is a project of Shahruh Technologies Private Limited under the legal umbrella of Shahruh Technologies. We are doing it. So our team is consisted of highly qualified media professionals, data science experts, and web platform development professionals, having over 10 years of experience each. So this platform is being developed by Shahruh Technologies Private Limited. And I often ask myself why Shahruh is stepping into this media tech industry. So this is because Shahruh is a company with a good portfolio of data management, web portal development, and it deeply understands both academic and technological concepts of media industry and the emerging trends in it, like OTT, as you all know, over-the-top platforms like Netflix, 4G Flix, and all other over-the-top platforms. So myself, Hamid Said, I am doing my PhD in management sciences. We have team members doing their PhDs in technology, their PhDs in media sciences, and things like that. So this is the team that really needs to do it. And that is the main purpose of this conference, to get such like-minded people on board with us so they can revolutionize this media tech platform for us. Right. So what is Innova TV? So a brief introduction, just to save the time, I'm cutting some slides. So this is basically a platform that provides all these services under one roof. This is a centralized media tech platform that brings all these services under one roof. So people from media industry, they can find jobs and internships on this platform. So you can say this is a LinkedIn for media people. And along with that, they can also find freelancing opportunities in that marketplace. They can also book advertisements on various platforms like print media, electronic media, and things like that. We are also integrating studio and equipment rental algorithm here. So we talked about AI, we talked about technological revolution. So here it is. So we are integrating AI to suggest you the best suitable studio and equipment that is available near you on affordable prices. So then you guys can see then there is a huge trend of podcasting. So everyone has started their own podcast. Everyone has become a host. Everyone is going to podcasts. So we have created a platform where you can find relevant guests. So if you are into technology, you can find relevant guests from technology. If you are into management, you can find relevant guests from management. If you are into media, you can find relevant guests from media. So that's how it works. And last but definitely not the least, you can manage your star giveaways and merchandise using this online platform. So that's the brief introduction. So the problem right now is here that there is no centralized hiring, freelancing, and sharing economy platform available for this booming media industry that is touching trillions in dollars. So we as a solution are providing a focused, integrated, and comprehensive platform for this industry under one umbrella. So our value proposition is that we are using cutting edge web development technologies. We are using advanced search algorithms. We have integrated secure payment gateways, and we have integrated AI recommendations in this platform.
So why now? So why haven't Shahruh Technologies has done it in 2019, or why is it is not planning to do it in like 2027? So the answer is the huge trend of podcasts that we are seeing all across. And me as a researcher and other researchers in our team, they have predicted media tech as the next big thing. So we heard about fintech, we heard about blockchain, we heard about agri-tech, we heard about a lot of things. So the matter of the moment, the point of the moment, the matter of the hour is media tech, because it has a large audience. Anyone from like age 8 months to 80 years or like beyond that, it's a user of these media tech platforms. So YouTube, for example, so YouTube has a huge TAM, total addressable market. So everyone, almost everyone is on YouTube. So this is the kind of impact media tech platforms can generate. So then, if some industry is booming at this pace, so it also needs employment opportunities for people in it that we are working on, and we need to gear up for future trends in this industry. So as I just mentioned, it's a huge market size of 2.3 trillion dollars. It was in 2021, but in 2027, it is expected to hit 3.6 trillion dollars. So as you guys can see, it's huge. And especially only in Pakistan, where we are residing at the moment and our head office is, it is growing from 1.3 billion to 1.8 billion dollars. So yeah, again, it is huge. It is almost equivalent to the whole IT economy of Pakistan. So we need to take care of this size as well. So our business model is very simple at the moment. It's a freemium model where you can avail all these services for free, and we will be generating revenue through some other channels like premium subscriptions, transaction fees, and advertising partnerships. So here is the details of that business model that I'll skip just for the sake of time. And I thank you everyone for listening to this presentation about Innova TV and being always helpful to Innova TV, that is media partner for this online conference. And we are really thankful to all of you who have joined us for this amazing conference and listened about the Innova TV initiative and how it is gonna bring change in this booming media tech industries. So we will also upload this presentation to our conference proceedings, and we will be requesting your feedback on this initiative that we are going to take, because we cannot invent things on daily basis. So while we are inventing, we want you to be part of that, to witness this frenzy with us, to witness the journey with us, to join us on this journey, because this is not something usual. You guys can just simply see that this is something unusual and this is really gonna revolutionize things. So be with us, stay with us, stay tuned to the initiatives of Innova TV, Bani Kahani, Shahruh Technologies, all together trying their level best to eradicate unemployment from media industry, to eradicate low pays in media industry, to answer the concerns of media people, to answer the concern that media is not some slave of government. Media is an independent platform. Media is a fourth pillar of our society. So while we are trying to strengthen, or maybe not trying to strengthen our first three pillars, we also need to deeply care about media and how technology is going to revolutionize this fourth pillar. Because media today is not only media, it is highly integrated with technology. So no media house is operating without technology today. So I have visited like all the big media houses here in Pakistan, and everyone is integrating technology. And whoever is integrating technology up to more extent is doing more good. So we have really good media houses in Pakistan, and we are no threat to anyone. We are no competition to anyone. We are here to bring them all under one roof, to pool all the opportunities for this segment of society, so they can take benefit out of that, and they can do much better than they are doing, because this is where we can really do the good diplomacy through these media tech platforms. So that's all from my side, and we are heading towards the last few minutes of our day one in this international conference. I request you all in these last few moments, just before we get addressed by our chief guest, Dr. Saeed Ahmed Qadri. So I would request you guys to kindly join us again tomorrow on the day two of this International Media Tech Conference. So we are concluding day one, just last, 8 to 9 minutes. So stay with us. So our chief guest, Dr. Saeed Ahmed Qadri, who is
Chief Happiness Officer at Shahruh Technologies Private Limited. He makes sure that everyone at Shahruh is happy. So he is doing an amazing job. So he is keeping all of us happy, taking care of whatever we need. And he is also director of Noor PK, an initiative of research and agri-tech that is here to our agri-tech industry. So I would request Dr. Said Ahmed Qadri, who is my father. I'm a proud son of him. एंड आई वुड रिक्वेस्ट हिम कि वो हमारी इस तमाम ऑडियंस का आज के इस पहले दिन के अख्ताम पर ना सिर्फ शुक्रिया अदा करें बल्कि इनके साथ अपने ख्यालात का इजहार भी करें और जो हम ये मीडिया टेक इंडस्ट्री में और मीडिया में और इवन टेक्नोलॉजी में ये कुछ अजीबो गरीब किस्म के ट्रेंड्स देख रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी देख रहे हैं, उससे बाहर निकल कर ये जो चंद चेहरे इस मुल्क में एक मुस्बत असर छोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, इनकी हौसला अफजाई भी करें। तो मैं चाहूंगा कि आप तमाम वेलकम करें हमारे साथ मिलकर हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर सईद अहमद कादरी को। सर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मैं सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतहाई शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये शाहरुह टीम को ये तौफीक अता फरमाई कि इन्होंने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया। अल्लाह ताला इनकी काविशों में बरकत अता फरमाए और इन्हें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उसके बाद मैं तमाम उन शुरका का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो कि हमारे साथ शामिल रहे, जिन्होंने हमें सुना, जिन्होंने हमें देखा। इसी हवाले से मैं एक दो बातें शेयर करना चाहूँगा आपके साथ कि अबलागे आमा मीडिया इन पर जो सबसे बड़ा इतराज़ होता है वो ये होता है कि जनाब हुकूमत इन पर पाबंदियाँ लगाती है, ये जनाब अपनी बातें जो हैं वो बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं और मामला ख़राब से ख़राब तर होते हैं। तो इसके लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुक़द्दस हमारे लिए बेहतरीन मशले राह है कि खैरुल अमूरी औसतुहा, इतदाल, अदल। और अगर इसको अपनाया जाए तो कहीं कोई मसला पैदा ही नहीं होता। लेकिन क्या किया जाए, शुमिय किस्मत कि जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ, जो था ना खूब बतदरीज वही खूब हुआ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। हम लोग अंग्रेज की गुलामी से छुटकारा पाने के बावजूद भी छुटकारा नहीं पा सकते। वो क्या किसी ने कहा कि बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, बेवकार आज़ादी हम गरीब मुल्कों की, ताज सर पे रखा है और पाँव में बेड़ी है। तो मैं पूरी शाहरुह टीम से भी ये सलाह करूंगा कि जैसे ये नोवा टीवी की तरफ जाना चाह रहे हैं कि इतदाल को अपनाया जाए और कोई भी खबर जो है वो बगैर तस्दीक के आगे ना बढ़ाई जाए। और उसके लिए जो सबसे बड़ी हमें हिदायत मिल सकती है वो बकौल इकबाल के एक मिसरा है कि सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना और नजफ, कि अगर ये सुरमा, अगर ये मोहब्बत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये इताअत इलाही, अगर ये इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के दिलो दिमाग में मौजूद होगी तो हमें वही नजर आएगा जो हकीकत है। फिर दानिश फरंग हमें खीरा नहीं कर सकेगी। तो मैं इसी के साथ दोबारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ, आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला शाहरुख टीम के काम में तरक्की दे, बेहतरी दे, बरकत दे। अल्लाह ताला हम सब का हामियों नासिर हो। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद अहमद कादरी साहब ने। अभी हम तमाम अहबाब को कुछ नसीहत भी फरमाई टीम शाहरुख को, स्पेशली आई बिलीव यू गाइज आर टेकिंग नोट्स ऑफ दैट। और हमें ऑब्वियसली इन चीज़ों पर अमल दरामद करना है और यही वो चीज़ें होंगी जो आई बिलीव के पाकिस्तान का एक पॉजिटिव इमेज आगे भेजने में कामयाब होंगी। आज हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में। आप तमाम आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हम आपके मशहूर हैं। बल्कि वो जो अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं ना इन डेट, तो बेसिकली हम मकरूज़ हैं आपकी इस मोहब्बत, इस खुलूस, इस अपनाइयत के कि आपने दुनिया भर से हमें ज्वाइन किया। और थोड़ा सा मैं इस मौके पे इमोशनल भी हूँ क्योंकि हमने जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनकाद करना चाहा तो हमें मालूम था कि मुल्क में इंटरनेट के मसाइल हैं
हमें ये मालूम था कि ये हमारी पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, शायद हमें लोग ज्वाइन ना करें। तो हमने एक छोटा सा फिगर रखा था कि अगर हमें 10 से 20 लोग भी ज्वाइन कर लेंगे तो हम समझेंगे कि हमारा पैगाम आगे पहुंच गया। क्योंकि मोहब्बत का पैगाम थोड़े लोगों तक भी पहुंच जाए तो वो बहुत होता है। रोशनी की एक किरण जो है वो अंधेरे को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि वो जो हम 10-20 लोगों के बारे में तसव्वुर कर रहे थे, वो हमें 50 से ज़्यादा स्पीकर्स इन 2 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह ज्वाइन कर रहे हैं। और उन तमाम अहबाब के और उन तमाम अहबाब के जो जिन्होंने हमें ज्वाइन किया और वो एकदम से स्टार ऑफ द शो बन गए। इस बात से मेरी मुराद डॉक्टर जाफर समदानी साहब हैं। डॉक्टर साहब हमारे पास पोस्टर्स में मौजूद नहीं थे जब हम इस इवेंट की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया और माशाल्लाह छा गए डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से गुफ्तगू फरमाई और बहुत ज़्यादा तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ प्रोफेसर इफ्तिखार रसूल शेख साहब का, जो कि बनफ़्से नफीस हमारे पास आज ऑफिस में तशरीफ़ लाए। हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर सईद अहमद कादरी साहब का वंस अगेन शुक्रगुजार हूँ। और आपका तो मैं कभी शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप मेरे वालिद गिरामी भी हैं और आप शाहरुख टेक्नोलॉजीज़ के चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर हैं, और आप हमेशा हम सबको खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो मैं मोहतरमा अरफा अरबी साहिबा से कहूँगा कि वो इस कॉन्फ्रेंस को फॉर्मली कंक्लूड करें, और इंशाल्लाह आप तमाम अहबाब से मुलाकात होगी अब कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 से 5 बजे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हामिद सईद की तरफ से अल्लाह हाफिज़, और अरफा अरबी अभी आपको अल्लाह हाफिज़ कहना चाहेंगी। Thank you so much, Mr. Hamid. As it was day one of our international online emerging trends in media tech, I extend heartfelt thanks to all our keynote speakers, panelists, and Dr. Said Ahmed, Professor Sheikh Iftihar Rasool, Dr. Jafar Samdani, and all of you. Your insights on topics like AI, social media, women empowerment through technology, and high-speed internet have truly enriched our understanding of media tech's role. Thank you for your time, expertise, and commitment to shaping the future of this industry. We look forward to tomorrow's More exciting where more discussions await. Until then, take care and have a wonderful evening. थैंक यू वेरी मच। बस जाते जाते मैं आप तमाम अहबाब से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पे इस कॉन्फ्रेंस के डे 1 का इख्तिताम करना चाहेंगे। तो अगर आप तमाम लोग अपने आप को एक ही वक्त में अनम्यूट करके कैमरा ऑन करके ये पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दें, तो उन तमाम हलकों तक जो पाकिस्तान का अच्छा नहीं चाहते, हम एक अच्छा मैसेज पहुंचाने में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। तो अगर आप में से कोई ऑफिस में है और वो ये नहीं करना चाहता तो इट्स परफेक्टली फाइन, लेकिन वो अब आप जो ये कर सकते हैं प्लीज़ मेरे साथ मिलके ये ज़रूर कीजिएगा। तो आप सब लोग अपने आप को अनम्यूट कर लें, जो जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो कैमरा ऑन कर लें। उज़ैर शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। आपकी हम गुफ्तगू नहीं सुन सके, इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा रब्ता करेंगे। तो पाकिस्तान जिंदाबाद। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए अपने आज के मेहमानान मेज़बानों को। आपके साथ इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह। शाबाश भैया।